So, hello guys, welcome back to the live stream and today we are going to play GENSHIN Impact और आज हम लोग guys आर्कॉन क्वेस्ट कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हमने कल पार्ट 3 कंप्लीट किया था, आज पार्ट 4 स्टार्ट करना है एंड आई बिलीव सो सिर्फ 3 एंड 4 ही हैं, 5 नहीं है आर्कॉन क्वेस्ट में। सो विल सी कि आज कितना टाइम लगता है आर्कॉन क्वेस्ट करने में। कल एक्चुअली मेरे को लगा नहीं था इतना लंबा आर्कॉन क्वेस्ट है, बट एक्चुअली काफ़ी लंबा आर्कॉन क्वेस्ट है। सिर्फ पार्ट 3 ही बहुत लंबा था, पार्ट 4 तो भाई मैं बोलता हूँ बहुत खींचेंगे ये लोग, मेरे को लग रहा है। तो मजा आएगा इस स्ट्रीम पे, आप लोगों से बातचीत करेंगे और आपने अगर लाइक टारगेट कंप्लीट करा दिया 25 लाइक्स का तो हम लोग अकाउंट रिव्यू भी करेंगे गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू गाइस जॉइनिंग इन। जितने स्ट्रीम पे आओ गाइस लाइक जो कर देना स्ट्रीम को, जितने स्ट्रीम पे नहीं हो गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम, लेट्स पुट द गेम एंड चलते हैं। सबसे पहले आप लोग की चैट पढ़ते हैं, उसके बाद जाएंगे गेम के अंदर एंड गेम को एंजॉय करेंगे। तो अभी तो मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करने पे आई थिंक एक भी बंदे की अभी चैट नहीं दिख रही है, बट जब आएगी तो मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई थिंक हमारे कमीशन ऑलरेडी हो चुके हैं कल, क्योंकि आर्कॉन क्वेस्ट हमारा रिसर्ट के बाद फिनिश हुआ था, तो डेलीज हमारे हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू सी कि हमको अपने रेजन कहाँ डालने हैं। और आज सैटरडे का दिन है, ऑब्वियस सी बात है, डोमेन खोले होंगे। देखते हैं कहाँ डालते हैं हम लोग रेजन्स को। हेलो हिटलर, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हालचाल है? द मैन द मिथ द नूब डेविस यहाँ पे आ चुके हैं ना। डेविस नूब कैसे हालचाल है तुम्हारे? गलती से मेरा स्लेब आपकी चैट में भाग आया, ले जाओ उसको पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। डेविस तुमको देखो ये स्लेब बोल रहा है, तुम उसके स्लेब कब बन गए डेविस, ये बताओ हमें। कैसा लगा आर्कॉन क्वेस्ट? अभी चैप्टर पार्ट 3 किया हूँ, उसमें तो सिर्फ बातें बातें चल रही थी, कुछ एक्शन नहीं हुआ है। पार्ट 4 में मैंने सुना है कि एक्शन है, तो पार्ट 4 देखने के बाद बताऊंगा कैसा लगा आर्कॉन क्वेस्ट। अभी से कैसे बता दो कैसा लगा आर्कॉन क्वेस्ट? अभी करने तो कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। अभी एक्शन वाले पार्ट में जाने दो, तब तो रेटिंग ढंग से दे पाएंगे, ऐसा थोड़ी दे देंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना आर्कॉन क्वेस्ट, देन आई कैन से कि इट वाज गुड और इट वाज बैड करके। अभी बोलना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अभी तो हुआ भी नहीं है कंप्लीट मेरे से। भाई 50-50 पे हूँ, 50 पीसेस है, कौन सा कैरेक्टर लूँ? सिलोनिन निकालो। सिलोनिन नहीं निकाली क्या तुमने? हिटलर सिलोनिन निकालो भाई, सिलोनिन। एटलीस्ट उस पर रिस्क लेके 50-50 हारे तो अच्छी बात है, जीते तो भी अच्छी बात है। नहीडा नहीडा भी निकाल सकते हो, नहीडा नहीं है तुम्हारे पास तो। आ, मेरी देखो डेविस तुमसे हालचाल पूछ रहा है घोल। भाई डेविस स्लेब बन गया, डेविस जान बन गया दूसरे की। क्या चल रहा है डेविस ये तुम्हारे साथ? चलो गाइज अभी हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या फार्म करना है रेजन से हमारे। एंड टैलेंट आज नहीं होगा ना, टैलेंट बुक्स का डोमेन प्रॉब्ली, हाँ संडे के दिन आएगा, कल आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इस वेपन को अपग्रेड कर देते हैं, सिनेबार स्पेंडल को हम लोग। डोमेन इसका भी डोमेन नहीं है, इसका भी संडे को ही आएगा सिनेबार स्पेंडल का। आई गेस फिर हम कंडेंस बना के छोड़ देते हैं, फायदा नहीं है कुछ भी यूज करके अभी कंडेंस। कल ही यूज कर लेंगे इसका कंडेंस यहाँ पे। तो देखते हैं सिनेबार स्पेंडल का कितना अपग्रेड हो जाता है। कैरेक्टर का नहीं देख सकते क्या? सॉरी वेपन का नहीं देख सकते क्या यहाँ पे? आई थिंक मेरे पास नहीं होगा, यहाँ पे 10 बन रही है सिर्फ इस पे, 2 रिटर्न की है इसने, 4 बन रही है। आई थिंक हो जाएगा क्या? 4 नहीं 5 चाहिए रहती हैं आई थिंक ये तो। लेट्स सी सिनेबार स्पेंडल में 5 चाहिए होती हैं, नहीं 4 ही चाहिए है। कंप्लीट हो गया एक्चुअली इसका 18, विच मीन 17 बनाने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे ये वाले कोर्स। और ये 6 पड़े हैं, ये 21 पड़े, मेरे को फार्म करना पड़ेगा। मेरे पास ये भी खत्म हो रखे हैं।
भाई गजब गरीबी चल रही है भाई मेरी है। बताओ गाइस, गरीबी गरीबी चल रही है भाई भाई। कितने बनेंगे ये? 14 बनेंगे। एनफ नहीं है। देगी क्या रिटर्न मुझे? एक रिटर्न दी है। 17 चाहिए था, कम पड़ गए मुझे। आर्कॉन क्वेस्ट हो गया? नहीं अभी चल रहा है, चल रहा है अभी। आज एक्ट 4 चालू करना है मुझे। 2 और करने ना। शॉप से ले लेते हैं, शॉप में होगा आई थिंक हमारे पास, शॉप में पड़ा होगा। शॉप से लेते हैं। केओस सर्किट यही चाहिए ना? हाँ यही चाहिए है। 3 3 6, 3 का 1 बनता है। हमको 2 चाहिए हैं आई थिंक। इसमें हो जाना चाहिए। वैसे मैं पूरा ले सकता हूँ, बढ़ में जाए पूरे ले लेते हैं। बहुत टाइम से पता है ये क्या कहते हैं, रूइन गार्ड मारा नहीं है तो मटेरियल ही नहीं है मेरे पास। बिल्कुल मटेरियल नहीं है उसके, रूइन गार्ड के। कैसे हाल चाल है घूल तुम्हारे वैसे? अरे आपसे पूछ रहा हूँ कैसे हो। तो मेरे को क्या पता भाई, मैं थोड़ी तेरी जान हूँ घूल। मेरे को लगा डेविस को बोल रहे हो, डेविस को हर कोई कुछ कुछ बोल के जाता है। यो स्ट्रॉक्स वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे वो मुझे नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है। आपको उसकी जान डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, तू है डेविस उसकी जान। तेरे को भाई हर कोई जान बोल के जाता है। तेरे को तो ड्रैको भी डिस्कॉर्ड में जान बोल के जाता है। तो मेरे को क्या पता भाई तू किसकी जान है। बुआ खोला आज, स्टैंडर्ड से कलचारो मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन सल में। तो मतलब तुमने लैपटॉप लिया और लैपटॉप लेने के बाद विजिटिंग लिस्ट डाउनलोड कर दिया उसमें। आई फिनिश माई सेलोनियन बिल्ड टुडे। सही है स्ट्रॉक्स। मेरा तो अभी चल रहा है, मेरे पास आर्टिफैक्ट नहीं है। आर्टिफैक्ट तो अभी आर्टिफैक्ट आराम से ही करूंगा। तो मैं बाकी चीजें अपग्रेड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो आर्टिफैक्ट इसके बाद सिर्फ आर्टिफैक्ट बचेगा, तो आर्टिफैक्ट का देखना है मुझे। एंड वो आराम से ही करेंगे फिर, जल्दी नहीं है क्योंकि वेल्स कब से गरीब होने लगा भाई। मैं वेल्स नहीं हूँ पहली बात तो डेविस। तो गरीब इंसान हूँ बस मैं, ऐसे समझ लो। तो गरीब इंसान गरीब नहीं होगा तो क्या होगा, अमीर थोड़ी हो जाएगा। अभी तो बस जेंसन वोवा एंड बेलो डाला है। घूल से कभी बात किया नहीं, वो आपसे ही ज्यादा बात करता है। आप ही उसकी जान है डार्लिंग हुए ना। मैं कब उससे बहुत ज्यादा बात कर लिया डेविस? चेक हर आउट लूसी एंड फूरिना प्रोफाइल पिक्चर इन फ्रेंड लिस्ट। चेक करूंगा स्ट्रॉक्स, पहले लाइक टारगेट हो जाने दो वो, क्योंकि रिव्यू के अंदर काउंट होगा। मैं कर दूंगा चेक, बस तुम रहो स्ट्रीम पे, हो जाएंगे लाइक टारगेट कंप्लीट। मेरी जान कोई नहीं है, खाली आप मेरी जान हो। गर्लफ्रेंड मेरे बार जान नहीं है, खाली आप ही। ये क्या लॉजिक हुआ फूल? ये क्या लॉजिक हुआ तेरा? मतलब एक दिन इस बंदे के अकाउंट में जाके मैंने थोड़े से फ्लावर क्या ले लिए सेलोनिन के, मैं इसकी जान बन गया। वेरी नाइस लॉजिक कूल। कैप्टन आ गया, मैं जरा ये वाला एक्ट खत्म करके आता। बिल्कुल ओके, ज्यादा हो गया, नो होमो। गाइस लाइक कर देना जो लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जितना स्ट्रीम बनाए, जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करेंगे उतने जल्दी हम लोग अकाउंट रिव्यू चालू करेंगे गाइस, ठीक है। तो 25 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी कंप्लीट करा दो ताकि फिर हम लोग आप लोगों का रिव्यू कर सकें। चलो आई गेस माइनिंग वाला भी हो गया होगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट। चलो अभी हम लोग क्या आर्कॉन क्वेस्ट चालू कर सकते हैं क्योंकि हमारा हो गया है कंप्लीट। ये क्या है? यू मीट अ म्यूजिशियन इन एटलन एंड नाम मिलू न्यू बट ही अपीयर्स टू हैव एनकाउंटर्ड सम ट्रबल। ये कौन सा आया है कमीशन यहाँ पे? ओके इसको देख के आते हैं। कमीशन आया है कोई नया यहाँ पे। ओ अच्छा हाँ, ये वो वाला कमीशन है जिसमें हमको इसकी रिकॉर्ड डिस्क तोड़नी नहीं है। आई रिमेम्बर दिस वन, मैंने गलती से पहली बार में तोड़ दिया था। यो ससी वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हाल चाल है? आई फिनिश्ड गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक एंड बाय द वे इट वाज एपिक। यप इट वाज गुड एक्चुअली, बट टू बी ऑनेस्ट पता है थोड़ा वो क्या कहते हैं
ब्लैक मिथ वुकोंग ने स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, तो आई वोंट से कि एक्चुअली बहुत इंसेनली अच्छा था, बट हाँ अच्छा था इस गेम। अभी तुम्हारा वो भी आया है ना, क्या कहते हैं, ड्रैगन वॉर स्पार्किंग 0 आया है, वो भी अच्छा है बोल रहे हैं लोग। हॉट 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 मेरा अकाउंट रिव्यू। अरे तेरे घर का रिव्यू करते हैं ससी, हम अकाउंट थोड़ी रिव्यू करते हैं। हाँ बैंक अकाउंट तू दे रहा है तो बात अलग है, मेरे को दे दे, मैं बैंक अकाउंट रिव्यू करके दे देगा, फुल पासवर्ड दे देना बस मुझे, और मेरे को ट्रांजैक्शन परमिशन वगैरह दे देना बस। नहीं चाहिए हमको डेविस स्पॉइलर। आर्कॉन क्वेस्ट कल नहीं करा, कल एक पार्ट कर पाया था मैं, क्योंकि बहुत लंबा है आर्कॉन क्वेस्ट, तो सिर्फ एक्ट 3 कर पाया था। आज एक्ट 4 करूंगा, शायद एक्ट 5 नहीं है आर्कॉन क्वेस्ट में, तो लास्ट है ये वाला एक्ट। Does Valhalla have a story in it? I have to start it. I mean, kinda I would say, but it मतलब तुम्हारा 3 रन में खत्म हो जाएगा वालहला, मैं ये बोलूँगा। एटमैक्स तुमको 3 रन चाहिए हैं, 3 रन में मतलब 3 रोटेशन करोगे तुम्हारा वालहला खत्म हो जाएगा। बहुत छोटी स्टोरी है। इट्स बेसिकली अबाउट कि तुम्हारा वो क्रेडोस को लाइक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको ट्रुथ की प्राप्ति हो जाती है, वैसा वाला सीन है। इधर आ जाओ सारे। मेरे को वहां लड़ना नहीं है, वहां रिकॉर्ड प्लेयर डला है भाई, टूट जाता है मेरे से। इधर आ सारे। Illusion shattered. Bring it. Forget it. इधर आना, इधर आ, पास आ मेरे, उधर नहीं लड़ना है मेरे को। Letting brave names echo. भाग गई है। Let's light it up lighter they never met. Quietly now. All right. I'm going in. Things are about to get dicey. Busted. There's no escape. भाई एक और वेव आ गई। Torn to oblivion. मेरे को लग रहा था अल्ट नहीं खोली पड़ेगी, अल्ट पड़ गई। इधर आ भाई, इधर आ, मेरे को उधर नहीं लड़ना है, इधर आ। Shine down. इधर आ। All right. Hear the echoes of the valley. डूबा नहीं बे, मेरी राइडन ने छोटी पड़ रही है, बंदा डूबा नहीं पानी के अंदर जाके। वाह भाई, जबकि राइडन की हाइट इससे ज्यादा बड़ी है। कौन मार रहा है बे तब से ऊपर से? लॉन्च किया जा रहा है। ये है। Let me use my member perk and do review on Hutao. कौन सा मेंबर पर्क भाई तेरा गुल? एक्ट 4 इज लास्ट बाय द वे। मेरे को लगा था कि एक्ट 5 भी होगा, तो मैं बोल के चला गया था, लेकिन खाली 4 ही है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, 4 ही है। अरे मर जाएगी, ध्यान नहीं दिया भाई। इधर आ जाना, उधर ही खड़ी है बहन की लोड़ी। इधर आना, इधर आ तू इधर आ, मेरे पास आ भाई। अब तो रेंज के बाहर भी हूँ। ये आएंगे नहीं, मैं कैसे उसका रिकॉर्ड प्लेयर लेके जाऊंगा? इधर आ, और आ गया थोड़ा सा। इतना ठीक है, आई गेस इतना मैं कर सकता हूँ।
Let's light it up! Gotcha! There is no escape! Illusion shattered! Quietly now. Music never dies. Achievement आ गई गाइस मेरे को. यही अचीवमेंट के लिए मैं कर रहा था तब से. म्यूजिक प्लेयर कैसे उठाऊं मैं? इसका म्यूजिक कैसे उठाऊं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि बॉक्स तोड़ूंगा तो ये टूट जाएगा. इसका बिना बॉक्स तोड़े कैसे उठाऊं मैं? लेट्स सी. रिपोर्ट बैक बोल रहा है ना. देख के आते हैं. शायद हो सकता है वो खुद ही उठा ले. Take it easy. गाइस लाइक कर दो जो लाइक नहीं किया. मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम बनाए हैं. फाइनली गाइस हो गया हमारा क्वेस्ट यहाँ पे. चलो अभी आर्कॉन क्वेस्ट करने चलते हैं. मैं सोच रहा था एनवेसाज डे को ट्राई करते हैं, बट एनवेसाज डे को के लिए कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा यार. ट्राई करके आए क्या एनवेसाज डे को? क्या बोलते हो चैट? मेरे को देखना है इस बार और कितना डिफिकल्ट किया है इन्होंने एनवेसाज डे को लास्ट टाइम से. जोंगली को डीपीएस करना पड़ेगा बिल्ड, बट मैं सोच रहा हूँ कचिंग का करते हैं. कचिंग की ऑलरेडी बिल्ड है. आई थिंक कचिंग के पास उसकी स्वॉर्ड भी लगी हुई है. और उसमें क्या कहते हैं बफ भी है अभी कचिंग के पास. हाँ लगा हुआ है, सेट लगा हुआ है कचिंग पे उसका. चलो एक बार एनवेसाज डे को ट्राई करके आते हैं. कचिंग का देखते हैं कितना डिफिकल्ट है. जोंगली बिल्ड नहीं करना होता ना तो मैं जोंगली का भी ट्राई कर लेता, बट जोंगली का बिल्ड करना पड़ेगा. वो इनके केस में पता है इनको डीपीएस बिल्ड चाहिए होता है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे एनवेसाज डे को में. अगर तुम डीपीएस नहीं बिल्ड करोगे तो तुम्हारा क्या कहते हैं क्लियर नहीं हो पाएगा. अच्छा 90 करना पड़ेगा इसे. पता है टू बी ऑनेस्ट फ्रेंडशिप रिक्वायरमेंट सेंस बनता है. फ्रेंडशिप रिक्वायरमेंट के अलावा सेंस नहीं बनता है. लेवल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. क्या करना है यहाँ पे? पहले वाले में लाइट अप ऑल इलेक्ट्रो मॉन्यूमेंट विद इन अ शॉर्ट टाइम. सेकंड वाले में डिफीट ऑल अपोनेंट विद इन टाइम लिमिट. ड्यूरिंग ड्राइविंग थंडर फेज 2 चैलेंज एवरी 3 टारगेट डिस्ट्रॉयड विल बी ग्रांट द फॉलोइंग बफ फॉर 30 सेकंड. कैरेक्टर गेन इलेक्ट्रो डैमेज बोनस एंड इंक्रीज एलिमेंटल मास्टरी. ड्यूरिंग ड्राइविंग थंडर फेज 2 fruits of the vine will periodically appear. Pursue the character and applying dendro to opponent they touch. Fruits of vine will explode after touching the character. Applying dendro to character and opponent within its AoE once more. वहन चोद इन्होंने एनिमो रोग हिलिचुरल क्यों डाल रखा है? मेरे को नहीं पसंद आया टू बी ऑनेस्ट. मैंने देखने का ट्राई किया था दन दनादन. मेरे को उतना नहीं अच्छा लगा. मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो एनिमे. देखो देखो तुम घोल. इन्होंने रूइन ग्रेडर डाल रखा है, एनिमो हिलिचुरल डाल रखा है. और पक्का टाइम वेस्ट होगा ये. पक्का ये टाइम वेस्ट होगा. कैसे करेगा आदमी ये? देखते हैं. मेरे को लग रहा है बहुत हार्ड है कचिंग वाला. कचिंग वाला प्रॉब्लम बहुत हार्ड होगा. मॉन्यूमेंट वाला तो वजह तुम फिगर आउट कर लोगे. एक दो और चार क्यों है? तीन कहाँ है? Incoming.
मजाक है? अच्छा मेरे को इन्फ्यूजन लेके करना पड़ेगा, समझ गया मैं, इन्फ्यूजन लेके करना पड़ेगा। Speed of light. Don't blink. यप, ये वाला इजी था, इसके बाद वाला डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे एनिमीज मारने हैं इन वेसाज डेको में। क्योंकि ये टाइम लिमिटेड रहता है, टाइम ना डाले ना तो हो जाएगा आराम से, टाइम डालते ना तो दैट्स अ पेन एक्चुअली। Speed of light. मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पास तो चलो 5 स्टार वेपन है, जिसके पास 5 स्टार वेपन नहीं होगा वो कैसे करेगा इसे? Incoming. भाई कितना वो दे रहे हैं इंटरप्शन ये लोग। Speed of light. Hey. Cut to the chase. ये क्या है ऊपर? Incoming. What is that? Speed of light. Hey. Don't blink. बहुत ज्यादा एचपी है सालों की। Incoming. Hey. नहीं हो पाएगा बे, कैसे होगा? Nowhere to hide. भाई इसकी रूइन क्रेटर की तो और ज्यादा एचपी है, ये कैसे होगा? रूइन क्रेटर की इंसेनली हाई एचपी है। और ये फ्रूट ऑफ बाइन, मेरे को ये जानना है एनिमी के ऊपर क्यों नहीं स्पॉन हो रहा है, एनिमी से दूर क्यों स्पॉन हो रहा है फ्रूट ऑफ बाइन यहाँ पे गेम में? गेम डिजाइन करने वाले चूतियां हैं वैनचोद, कहाँ जाके स्पॉन करा रहे हैं। हम प्रीटी श्योर ये ऊपर इन्होंने बताया उसके लिए दिया है, प्लंज के लिए दिया है कि तुम प्लंज कर सको। Don't blink. Hey. Incoming. Speed of light. Cut to the chase. Don't blink. With sword comes shadow. Incoming. Hey. मेरे को कभी लगता है पता है इनको इन्वेसाज डेको के लिए C6 कैरेक्टर चाहिए, पता है तू ही करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें इन्वेसाज डेको पता है अटेम्प्ट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास एक्वायर नहीं करोगे कैरेक्टर को। वो देखो उसकी आधी एचपी हुई है और अभी भी लाइक टाइम 6 सेकंड बचा है, मार ही नहीं सकते तुम। मेरा जोंगली वाला हो गया वैसे, कैसे हो? बढ़िया है हम, तुम्हारे कैसे हाल चाल है सुकुना? जोंगली वाले के लिए मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा, डीपीएस मेरे पास नहीं है, आर्टिफैक्ट्स नहीं है जोंगली के लिए, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कचिंग वाला थोड़ा हार्ड है, चलो मेरी तो फिर भी C3 है कचिंग, लोगों की C3 नहीं होगी तो उनका नहीं होगा, कचिंग वाला कर ही नहीं सकते वो लोग। Don't blink. Hey. कहाँ मार रही है कचिंग? Speed of light. स्टैमिना खत्म हो गया मेरा, वेरी नाइस। With sword comes shadow. Don't blink. अभी देखो यही एलिमेंट पता है एनिमी पे लग जाता, मेरी हेल्प नहीं हो जाती है? Speed of light. मेरी हेल्प नहीं हो जाती अगर ये एलिमेंट एनिमी पे लग जाता तो।
Incoming. Hey! Cut to the chase. Speed of light. Don't blink. और ये बहुत लेट स्पॉन हो रहे हैं। अच्छा ये ऊपर वालों को डिस्ट्रॉय करूंगा तो बफ मिलेगा। ओके समझ गया मैं। With sword from shadow. Hey! समझ गया मैं। मेरे को ट्रांजिशन ऐसे करना पड़ेगा कि 3 बॉल डिस्ट्रॉय हो, फिर मेरे को क्या कहते हैं बफ मिल जाए, ताकि जल्दी कर सकूं मैं। मैंने एचपी जोंगली बिल्ड से किया है। एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसकी सुकुना? क्या ट्रिक है? Incoming. Speed of light. Cut to the chase. ये बफ एक्चुअली ऊपर वाले पता डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, पता अल्ट मारने के बावजूद भी। Incoming. Hey! दिक्कत की ये बात है। अरे मारे तो ऊपर Speed निकल of लिया। light. मेरे को बफ से कुछ डिफरेंस तो फील ही नहीं हो रहा है। Don't blink. Hey! मेरे को लिटरली बफ से कोई Speed of डिफरेंस फील light. नहीं हो रहा है। मेरी स्किल कूलडाउन पे मैं बफ ही नहीं ले सकता। Incoming. Nowhere to hide. Speed of light. Incoming. टू बी ऑनेस्ट पता है एग्रावेट पे जो मतलब डैमेज बढ़ रहा है ना, उससे एटलीस्ट मेरे को डिफरेंस फील हो रहा है। नहीं यहाँ पे डीपीएस चाहिए सुकुना। ईआर सैंड्स अगर डाल दूंगा, ईआर सैंड्स और ईआर शॉट डाल दूंगा ना, नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। जोंगली वाले में हो गया क्योंकि जोंगली वाले में अल्ट स्पैम करनी थी। मैंने तेरे को कल ही बोला था कि अल्ट स्पैम करनी होगी उसमें। लेकिन क्या कहते हैं कचिंग वाले में नहीं कर पाएगा तू। डीपीएस वाले जितने कैरेक्टर हैं उनमें नहीं कर पाएगा तू। अगर ईआर सैंड्स और ईआर सैंड चले जा सकता है, ईआर वेपन नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट आ भी गई तो तेरा डैमेज नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा क्लियर। वो बलून मूव ना करे ना, खड़े रहे, या तो नीचे थोड़ा सा कर देना तो अल्ट के साथ एटलीस्ट मेरे उसमें कवरेज में आ जाता। वो बलून बहुत ऊपर है तो वो अल्ट भी नहीं टच कर पा रही उन्हें, जबकि अल्ट का पता रेंज इतना है कि वो आराम से बलून फूट जाने चाहिए अगर मैं अल्ट चलाऊं तो। Speed of light. Don't blink. I literally see no difference to be honest बाप के थ्रू। पता है मेरे को लिटरली कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। Cut to the chase. Speed of light. Don't blink. Hey. यार नीचे आ जा यार। Speed of light. Incoming. Hey. वो देख भाग गया, वो देखा उसने भाग गया वो। With sword comes shadow. Don't blink. Speed of light. पॉसिबल ही नहीं है। Cut to the chase. Don't blink. पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा पता डैमेज लॉस हो रहा है। अगर तुम पता है वो ऊपर वाले बलून्स को लेने के लिए जा रहे हो ना, तुम्हारा डीपीएस लॉस हो रहा है क्योंकि तुम लाइक उसमें भी स्ट्राइक लगता है तुम्हारा एडिशनल, जब तुम क्या कहते हैं ई स्किल पे जूप करके जाते हो तो।
ये देखो इस पे डैमेज लगता है एनिमी को। और ये वही लगता है तो तुम्हारा लॉस ही हो रहा है। Nowhere to hide. Don't blink. Speed of light. मेरे को ऐसा लग रहा है फिजिकल कचिंग चाहिए यहाँ पे। इलेक्ट्रो कचिंग वर्क नहीं कर रही है। Don't blink. भाई सची तू भी नहीं कर पाता भाई, सच्ची बता रहा हूँ। This is like insanely difficult। क्योंकि इन्होंने C6 कैरेक्टर के हिसाब से डिजाइन किया है। Don't blink. 18 सेकंड में देख मेरे को लास्ट एनिमी को मारना है। अच्छा हुआ थोड़ी है इतनी एचपी है एनिमी की उस हिसाब से। Speed of light. Incoming. अरे डीपीएस लॉस हो जाएगा यार उसमें अगर मैं ईआर सेंड जाऊंगा तो, और मेरे पास नहीं होगा ऑन सेट, नहीं होगा ईआर उसमें। थंडरिंग फ्यूरी में नहीं होगा मेरे पास ऑन सेट वहां पे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो फ्रूट तोड़ना नहीं है ससी, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ रहा है और फटना चाह रहा है। तुम एनिमी को उसके पास नहीं ले जा सकते, तुमको एनिमी के पास जाना पड़ेगा ताकि वो फ्रूट आगे तुम्हारे ऊपर फटे। यहाँ पे लिखा हुआ है देख साफ साफ। फ्रूट ऑफ बाइन विल periodically appear and pursue the character. Applying dendro to opponent they touch, ठीक है। Applying dendro to the opponent they touch. So you have to be close to enemy in order to apply dendro वहाँ पे, ठीक है। And fruit of vine will explode after touching the character. Applying dendro to character and opponent within its AoE once more. समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? तो वो तुमको नहीं जाना है, वो खुद आएगा। इन चूतियों ने क्या किया कि दूर स्पॉन कर रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है स्पॉन होने में कि तुमको आरएनजी का वेट करना पड़ रहा है कि हाँ आरएनजी अगर तुम्हारे साथ है तो तुम फ्रूट तुम्हारा तुम डैमेज कर लोगे। आरएनजी तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम नहीं क्लियर कर पाओगे। यहाँ आरएनजी वाला सीन है। एंड कचिंग का इलेक्ट्रो में डैमेज क्या कहते हैं, रिएक्शन होने के बाद ही है, मोनो इलेक्ट्रो में नहीं है उसका डैमेज। उसके लिए टीम चाहिए उसको प्रॉपर। और ऊपर बलून के लिए जाऊंगा तो बलून में मेरा डैमेज लॉस हो रहा है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम वहां पे। लेट्स सी, बलून वाला ट्राई करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बलून जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। ये वाला रंग थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है। Speed of light. Incoming. मेरा अल्ट आ जा यार। Speed of light. Nowhere to hide. हाँ ये वाला रंग ज्यादा बेटर गया है, हो गया क्लियर, मिल गया। लाइट गई क्या? नहीं लाइट नहीं गई है। क्यों लाइट क्यों जाएगी? हेलो फ्रैगा, वेलकम टू द स्ट्रीम। नहीं वो जो बड़ा सा और वो आ रहा है ना ग्रीन कलर का दूर से, जिस पे ऐसे चेन बनी हुई है तुम्हारे ऊपर, वो है तुम्हारा क्या कहते हैं फ्रूट ऑफ बाइन करके जो भी है। कीज नहीं है मेरे पास इसके लिए। ये वाला किरारा वाला तो मेरे से हो ही नहीं रहा भाई। किरारा वाला तो पता नहीं क्या ही है। डैमेज ही है क्योंकि किरारा का डैमेज ऑलरेडी खराब है। किरारा इज सपोज्ड टू सपोर्ट, तो ये इन्होंने डीपीएस किरारा के लिए बना रखा है, तो ये किरारा वाला मेरे से हो ही नहीं रहा। मैं बहुत ट्राई मार चुका हूँ इसको। हैप्पी दशहरा, सेम टू यू। कहाँ गए फ्रैगर? देख के आए दशहरा? रावण जलते हुए देख के आए क्या कि नहीं देख के आए?
आओ चले वहां आर्कॉन क्वेस्ट करने चलते हैं अभी। ये क्या आ रखा है? अच्छा ट्रैवलिंग सेल्समैन का आ रखा है। कहाँ पे है हमारा क्वेस्ट? यहाँ कहीं होगा ना? आई थिंक यहीं कहीं है हमारा आर्कॉन क्वेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ना मैं नहीं जा रहा था कभी देखने। घर से बैठ के देख ले टीवी में, उसमें तो आता है, दूरदर्शन में तो आता है। डोंट टेल मी तू दूरदर्शन नहीं पता दूरदर्शन क्या है। या तूने दूरदर्शन आज तक नहीं देखा है? अच्छा घर में काम रहता है बहुत दिन। क्यों? क्या काम रहता है? मिठाइयाँ बनाता है? क्या बनाता है तू फ्रैगर? ये गेस्ट आते हैं तुम्हारे यहाँ? सोसाइटी में नहीं रहते क्या तुम फ्रैगर? सोसाइटी में तो बनाते होंगे आई थिंक। सोसाइटी वालों से यूजुअली पैसे कलेक्ट करके वो लोग मनाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेम टू यू थैनोस। कैसे हाल चाल है थैनोस तुम्हारे? Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've located the captain. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Auroran's memories and discovered something huge! And damn, what a thumbnail! Thank you, Thanos. Oh, all with his granny's permission, of course. Or no, actually it was... calm down, Paimon. I'll take it from here. और सुनाओ थैनोस, क्या कर रहे हो अभी? क्या किए तुमने? गरबा अरबा खेले कि नहीं खेले? So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ley lines. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. Is reconstructing the ley lines a bad thing? बस अभी बाहर से आया। बट क्या कहते हैं, गरबा अरबा खेलने गए कि नहीं खेलने गए? सेम टू यू सुकना। गाइस लाइक कर दो जो लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितना स्ट्रीम बनाए। जितना जल्दी आप लोग 25 लाइक्स कंप्लीट कराएंगे उतना जल्दी हम रिव्यू चालू करेंगे। गर्लफ्रेंड तो होगी थैनोस, ऐसा नहीं हो सकता है। थैनोस के गर्लफ्रेंड कैसे नहीं हो सकती भाई? जो बंदा चुटकी में सबको गायब कर दे वो उस बंदे की गर्लफ्रेंड होगी गाइस। वो डरा के रखा होगा कि तेरे को चुटकी बजा के गायब कर दूंगा, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। क्यों थैनोस? Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley lines. Very similar to the price of using a gnosis. Nearly everything contained within the current ley line and very similar to price of using the gnosis. एक बार मेरा गरबा में इतना बुरा हाल हुआ था कि नेक्स्ट टाइम नानचुक लेके गया था, अब वहां बैन हूँ। अबे तो तू गरबे में नानचुक लेके जाएगा तो बैन ही होगा ना थैनोस। कर दिया होगा नानचुक से तूने 4-5 लोगों को हिट। और वैसे भी गरबे में भाई गलतियां होती रहती हैं, कोई किसी को धक्का मारता रहता है, कोई किसी के पैर पर चढ़ जाता है, कोई किसी दूसरे लड़की के साथ डांस कर लेता है गलती से अपनी गर्लफ्रेंड समझ के। होता रहता है वो तो गरबे में थैनोस। डर के तो मैं रहता हूँ, तू क्यों रहता है भाई थैनोस? थैनोस को नहीं डर के रहना चाहिए गाइस। सिलो निकाली गया, निकल गई है मेरी सुकुना। तुमने नहीं देखा क्या स्ट्रीम पे? जिस दिन हमने वेडनेसडे के दिन स्ट्रीम की थी उस दिन नहीं आए थे क्या? गरबा मुझे भी नहीं आता है, वो तो देख देख के आदमी करता है। उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथ ही तो हिलाना है, कौन सा एक्चुअली फुल मतलब नशे में करना है डांस। नान विद चाकू, नान तो हाथ से कहाने वाली चीज है। ससी बहुत गंदा जोक था, ससी क्रिंज था। If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as possible. But what forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. All other warriors are working to push back the abyss on the front lines. मेरे हाथ से डंडा उड़ के कहीं और जाता है। फिर तो तू क्रिकेट भी नहीं खेल पाता होगा सुकुना। फिर तो तू कोई भी डंडे वाली चीज नहीं कर सकता होगा।
mention you lost your power, and they've got the captain on their side. Oh, maybe we really should get Lali to break Auroron's legs. That won't help us with the captain, I'm afraid. In any case, the Masters of the Nightwind are in urgent need of manpower. Lali, I was hoping you could head back and help defend the tribe. All right. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right, back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. सुक्कू को पकड़ना है नहीं आता उसको हर डंडे जैसी दिखने वाली चीज क्या कहते हैं, पकड़ना नहीं आता थैनोस, समझ लो अभी तुम। आपको कैसे मालूम? मैं तो गैस कर रहा था सुकुना, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा मैंने। Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. As you all know, Auroron is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to solve the issue. Their plan hinges entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is... We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. No, you are our leader, you lost your power. You shouldn't be the one to face the captain. I agree with Kanich. The two of us can handle it. थैनोस ब्रो, मैं तो सिंगापुर में हूँ, आपके क्या हालचाल हैं? Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. So you want us to lure him to the front? No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Shilonen, I need you to do what your tribe does best, and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it. So Shilonen is launching the main assault. Exactly. The Traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kanich, not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the captain's defenses. Leave it to me. Understood. Then we should head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. ये कमरे का लाइटिंग की वजह से मेरे को सिलोनिन की स्किन थोड़ी डार्क सी लग रही है, या लाइक इन्होंने कट सीन पे डार्क बना रखा है लेकिन एक्चुअली में लाइक थोड़ा लाइट है सिलोनिन की स्किन. I also try my best to not let things get to that point. Thank you, everyone. You have my word. I'll proceed with caution. किनिच को वॉइस नहीं दे रखी है. अरे ये वॉइस एक्टर्स वो है ना, उसमें है क्या कहते हैं, स्ट्राइक वगैरह पे हैं, लफड़ा चल रहा है कंपनीज के साथ, तो इन्होंने नया वॉइस एक्टर अभी तक हायर नहीं किया है. दैट्स व्हाई वॉइस नहीं है. आर्कॉन क्वेस्ट आ रखा है बट वॉइस नहीं है 2-3 कैरेक्टर्स की. दुख की ये बात है. मेरे को लगता है ये चीज़ तो पहले रिकॉर्ड करके रख लेनी चाहिए थी इनको, वॉइसेस, ताकि यू नो बाद में ये सब लफड़ा हो तो उस टाइम ये सब गड़बड़ ना हो, इनके पास एनफ टाइम रहे. आई थिंक ये लोग, मेरे को ऐसा लगता है जब एक्ट इनका क्रिएट होता है ना, उसी टाइम ये लोग क्या कहते हैं लाइक रिकॉर्डिंग करते हैं उनके वॉइसेस की. पहले से रिकॉर्ड करके रखते तो ये डाल के रखते वॉइसेस यहाँ पे लोग. मैंने सोचा नहीं होगा इस चीज़ के बारे में. आई थिंक वो कमरे का कलर की वजह से हो रहा है. हाँ मेरे को भी लग रहा है कमरे के कलर की वजह से है, क्योंकि वो इतनी थोड़ी काली है भाई जितने दिखा रहे थे. देखो उसकी स्किन देखो सिलोनिन की. कहाँ है हमारा क्वेस्ट? बीनीथ द सीक्रेट सोर्स, यहाँ पे जाना है. बट टेलीपोर्टर कहाँ है? अच्छा टेलीपोर्टर इसके नीचे है.
All right, this is the place. Their tunnel must be behind that gathering of Fatui guards. Any of the nearby mountains could be a good infiltration point, but if we want to stay under the radar, we should approach from the side. As agreed, Azo and I will handle things at the front. There are only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them first so they can't alert anyone. मेरे को एक चीज देखनी है. अच्छा ये पीछे साइड में जाना है ना हमको. मेरे को लग रहा था ये इसका रिलेशन है, लेकिन इसका नाम तुमने अगर नोटिस किया हो, ये लोग सीक्रेट सोर्स डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और इस ऑटोमेटॉन का नाम ही खुद सीक्रेट सोर्स ऑटोमेटॉन है. एन एंशिएंट मशीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. It is said to be producing machine produced by the long lost ancient civilization, as it can be both tool and a weapon. It is far more dangerous the most other secret source automaton warriors. Seems उस device और इनका connection है. How many forging commissions do I still have to finish? नहीं हमको मत बताओ, लेकिन तुमने देखी है, तुम अपने तक रखो, हमने नहीं, हमको मत बताओ. Not so many as I thought. Oh, और कहाँ उड़ गई क्रिस्टल फ्लाइज? इधर आ रहे? तू भागे जा रहे हो तुम लोग. आई थिंक सीधा ऊपर ले जाएगा हमको, बट ये जाना नीचे है. आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है. हाँ ये नीचे है हमारा. इन फटुइस को पहनना है. चेस्ट रखा ऊपर. You'll get lost, bud. Everybody stand back! Game's up. Time's over. Busted. Freshness. Inazuma shines eternal! all right, that's done. Let's head to the foot of the mountain. ये क्या मिला? कैप्चर्ड फोटोज. ये क्या मिला? कुछ मेरे को मिला वहाँ पे. कैप्चर्ड फोटो करके कुछ. कोई रूइन की फोटो बनी हुई है यहाँ पे. कहाँ है? What do you think, Shilonen? नहीं बताना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है. नहीं बताना पड़ेगा ना. क्यों बताना है? वो खतरनाक चीज हम भी देख लेंगे बाद में. जल्दी थोड़ी है. भाग थोड़ी जाएगा वो. अकाउंट गेम से डिलीट थोड़ी हो जाएगी वो चीज. कूल. Yeah, looks good. We'll take it from here. Keeping as quiet as possible, tribes people from the Children of Echoes make a quick work of digging a tunnel. I can see the inside. Perfect. We'll keep going. The rest of you should head back. Things. All right. Please, take care. गेम की चीज नहीं है क्या? दंदनादन की है. कूल. अब वो हम नहीं देखते दंदनादन, तो तुम ही देखो. हमको घंटा भर नहीं पड़ता दंदनादन से. हमने देखने की कोशिश की थी, हमको मजा नहीं आया कि एनीमे में. बंद कर दिया हमने. The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. क्या उस बंदे को उसकी बॉल्स मिल गई? You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards. बंदे को लगता है बॉल्स मिल गई इसलिए खुश है ये बंदा. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. Okay. But what if I'll do like head-on confrontation यहाँ पे अभी के अभी. यहाँ पे कुछ क्लाइंबिंग का बना हुआ है. I'm not sure क्या क्लाइंबिंग का बना हुआ है, बट क्लाइंबिंग का बना हुआ है. इधर कुछ तो नीचे कुछ है क्या मेरे?
देखो नो फटोई शुड रिमेन अलाइव यहाँ पे मेरा सीधा रूल है Let the magic's veins boil! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Here comes the catch! We've only just begun. Gotcha! There is no... Went too fast. यहाँ पे कुछ है क्या चेस्ट वगैरह क्यों नीचे क्या क्यों बनाता रास्ता इन्होंने कुछ भी तो नहीं है इधर पे फिर काहे के लिए दे रखा है ये रास्ता जगह इन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं है गाइस लाइक कर दो जो लाइक नहीं किया मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितना स्ट्रीम पे आए हैं हाँ वही चीज बोलना था दादी में नई गोटे चुरा लिए बंदे का वही गोटे उसको मिल गए क्या उसके देखा जाए तो राइडन सोगन की ड्रेस काफी सिंपल है एंड ट्रेडिशनल है ऑब्वियसली वो ओल्ड स्कूल है भाई जैसे नेटलैंड की लड़कियों की ड्रेसेस काफी फैंसी हैं आई मीन दे आर मॉडर्न एक्चुअली आर्कॉन खुद मॉडर्न ड्रेस पहन के रखा है कर दो क्योंकि मैंने किया था हेड ऑन सुजा भाई आपका रिएक्शन कैसा होता है अगर आपको पता चले कि एक दादी माँ आपके गोटे चुरा लिए हैं मैं बोलता भाई ये दादियों को भी लाइक चाहिए दादियों को भी चाहिए भाई इस एज में हमसे बताओ क्या ही चल रहा है इनके साथ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दादीज यहाँ पे गेम Quiet now. Things are about to get dicey. Shine down! Now you shall perish! मैं ये सोच रहा हूँ वो भाई के गोटे चुराए होंगे दादी माँ ने तो फिर तो वो छक्का बन गया होगा कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है उसका एनिमे का This spell is from the Masters of the Night Wind. It's Auroron's doing. They're probably trying to buy time. अच्छा इससे गेट खुल गया है ये की टाइप से थी वेल टू बी ऑनेस्ट फेयर ट्रेड है सी विल लेट हिम सक नहीं फेयर नहीं है भाई तुम ये सोच रहे हो भाई क्या गोल है तुमको ये चाहिए भाई वो लड़की कम है क्या वो जो कि उसमें मेन लड़की है अच्छा ये सेट करना है क्या आई थिंक मेरे को यहाँ पे फोटो चाहिए होगी मेरे को ऐसा फील आ रहा है वहां पे एनिमी बैठा है पता नहीं आई हैव अ फीलिंग कि ये यहाँ पे फोटो के हिसाब से करना है हमको फोटो के हिसाब से डिजाइन करना है इसे इसलिए हमको फोटो ड्रॉप की थी उसने कैप्चर्ड फोटो करके दिख भी नहीं रहा फोटो इतनी छोटी रखी इन्होंने एन के लॉर्डों ने आउटर वाला कौन सा है पहले मेरे को वो देखना है आउटर वाला कौन सा है बढ़िया Hear the echoes of the valley! Teamwork is dreamwork! Busted! Inazuma shines eternal! There is no escape! अभी आक्रैश होगा Quietly now. Illusion shattered! बट इसका रेजिस्टेंस डाउन हो चुका है अभी
मेरे को नीचे साइड वाला कौन सा हिस्सा है बे? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। नीचे साइड वाला कौन सा हिस्सा है इसका? नीचे साइड वाला कौन सा हिस्सा है? यहाँ पे कुछ ओके पॉइंटी सा ऊपर जाएगा। उल्टा लग थोड़ा सा उल्टा करना है इससे आई थिंक। I think this is the one. Doesn't look right though, पता है? लग तो नहीं रहा सही मुझे। नहीं हिंट देख रहा हूँ, मेरे को फोटो ही समझ में नहीं आ रही। फोटो बनी किस चीज की है? वो इतनी छोटी सी फोटो है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा फोटो बनी किस चीज की है। अरे यार हिंट पे क्लिक हो गया गलती से, साला वो आगे निकल गया। थोड़ा सा सही का हो गया था बस, अभी फिर से करना पड़ेगा वो। ओके ये सही है, देखो यहाँ पे अभी ये सही बैठ गया है। सड़ जाना है। भाई वॉल भी क्लाइमेबल नहीं है। वाह वेरी नाइस। वॉल ही कहाँ क्लाइमेबल नहीं थी इन्होंने। ये वाला कौन सा घुमाएगा? अच्छा सेकंड वाला घुमाएगा। यप ये वाला भी हो गया। नाउ यहाँ पे 3 होने चाहिए ना टोटल। यहाँ पे टोटल 3 होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये सही है। नहीं ये गलत है थोड़ा सा। अरे चूतिया मादर हिंट बार बीच में आ रही है। वैनचोद हिंट पे क्यों चले जा रहा है? स्टॉप करना था, वो स्टॉप होते होते वो हिंट पे चला गया। वैनचोद स्विच कर दिया इन्होंने वहां पे। बन गया सिंबल। I'ma not help people anymore. I like to watch people suffer। कर लिया मैंने, आसान था। वो हिंट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। हिंट बार पता स्विच कर दे रहा है पोजीशनिंग उसकी। मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टॉप पे मैं सोच रहा हूँ वहीं आएगा, वो हिंट स्विच कर दे रहा है उसकी जगह पे। बार मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, हिंट खुल जा रहा है। कैप्टन और यहीं पे हैं गाइस। नहीं जरूरत नहीं है, हो गया। थोड़ा सा देखना था मुझे साइड का कैसा दिख रहा है, क्योंकि लोकेशन पता चल जाती मुझे। Oh, the captain's here too. Perfect. Looks like They're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. Stop! It's too late. We need to turn it off! There is still time. I won't let you do this. ये किस चीज को जगा रहे हैं भाई? ये कुछ आवाज आई, ऐसा लग रहा है कोई बंदा जगने वाला है। The sound of lament? What was that sound? It was like a piercing cry. now's our chance to turn off the device. Auroran? How did he just... His movements have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? This ends now. ये क्या हुआ? कैप्टन ने उसको खुद पेल दिया? What the heck? Something's wrong.
वेट, कैप्टन ने सेलोनिन की हेल्प क्यों की? ओरोन को पेल दिया उल्टा उसने। फिर से सेलोनिन काली दिख रही है। हाँ वही तो। रिमेंबर व्हेन आई हैड सेड ओरोन इज नॉट ओरोन। भाई क्या पागलपंती थी भाई ओरोन की। व्हाट द हेक। माता वाता आ गई ओरोन को भाई एकदम से। ये क्या हो रहा है ओरोन के अंदर? ऐसा पोजीशन लग रहा है किसी चीज का। You are not Auroron. Who are you? What? Commander. है? You. कमांडर क्यों बोला इसने? So, you still recognize me, Commander? I'm glad. Although, I believe you have some more pressing concerns at the moment. इसके अंदर किसी चीज की आत्मा है ऐसा लग रहा है। बंदे के अंदर किसी चीज की आत्मा है ऐसा लग रहा है। You see? You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost your chance. Even now, you're still the same as ever. His voice is completely different. Is someone inhabiting Auroron's body? Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to स्वागत नहीं करो, win. स्वागत तो करो हमारा। That must be why I डंडा नहीं मिल रहा returned हमें, आखिर को हम स्वागत कैसे for करें this तुम्हारा? moment. You just need to win. That must be why I have returned for this moment. ओरोन किसी पुराने सबऑर्डिनेट की आत्मा घुस गई है। सुजा भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है। तुम्हारे कैसे हाल चाल है? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। Please finish what you set out to do, Commander. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. He's already close to death. After all, his soul has been incomplete from the start. Cutscene? Hello? Oh, someone said I'm close to death. Is it because of that noise just now? The piercing cry came from underground when I activated the device. What's down there? Natlan's ley lines must be hiding some kind of secret. अब ओरोन भाई बाहर आ रहा है, आने वाला है क्या? उठने वाला है क्या? जिंदा होने वाला है क्या? Am I dying? Oh, no. It's too soon. हाँ पूरा मस्त है, जबरदस्त है। डंडा नहीं मिल रहा तो चप्पल से स्वागत कर दो। ये भी ठीक है, आ जाओ कर देते हैं साकी को हम तुम्हारा स्वागत चप्पल से ही। मैं दोनों चप्पल ऐसे तेरे कानों के बाजू में रखूंगा, बोलूंगा व्हाट आर यू। कैमेलिया का गेम प्ले देखा, बहुत सेक्सी है। नहीं देखा हूँ, देख लूंगा आकी को बाद में। Ah, Auroron, it's you. What'll it be today? Oh, why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I knew it was a bad idea to tell you. I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do. Auroron, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. देख लो गाइस, सिटलाली का रियल रूप देख लो गाइस। देख लो गाइस, सिटलाली ऐसी दिखती है गाइस, रियल रूप है ये सिटलाली का। ये रियल रूप है सिटलाली का गाइस। Can I get you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? Ask for anything you want. We've got plenty of ingredients. By the way, इस अपग्रेड में नहीं क्या है, कूरो को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसका हर एक मूव सेक्सी है। भाई सेक्सी का आदमी करेगा क्या आखिर को, जब डैमेज नहीं रहेगा। अगर कैमेलिया का डैमेज तुम्हारे इक्विवेलेंट टू किसको बोलूं मैं,
लेट्स से यिनलिन या फिर तुम्हारे क्या नाम था उसका, नाम भूल गया सबसे पहले कैरेक्टर का 5 स्टार का, उसके जैसा हुआ तो कोई फायदा नहीं है सेक्सी मूव सेट का भी। वैसे भी इस अपडेट में मेरी फेवरेट जेंसन कैरेक्टर अब ओरोन की दादी माँ है। सबकी हो गई है गोल। चस्का का गेम प्ले देखा, चस्का केनिच ओरोन वॉन्डरर में धरती पे कर नहीं रखने वाला। they are actually power creeping Wanderer right now, like they are saying कि Wanderer तू अकेला उड़ने वाला कैरेक्टर नहीं हो सकता है, तेरे अलावा भी मैं बहुत सारे उड़ने वाले कैरेक्टर डालूंगा, तेरे बैनर को मैं चूस जाऊंगा। भाई डैमेज की परवाह रहनी चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी आखी को पुल्स तुम कहीं पे भी डाल दो, ऐसे तो हर एक कैरेक्टर आने वाला सेक्सी ही होगा आखी को, इसका मतलब थोड़ी कि हर किसी को तुम पुल कर पाओगे, तो यू हैव टू डू केयरफुल सिलेक्शन। What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merchant, to be. Never thought about going into business yourself, my boy. You could travel. Our Auroron? A merchant? He's far too honest for that. Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then why did my birth open the door to the possibility? Why give people false hope? हाँ वो तो होगा ही आखिर को, यिनलिन का रीजन होगा। Maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. So, what's mine? If I had succeeded back then, would the world have become a better place? What's the meaning of my existence? Done spacing out, Auroron? Did you finish your homework? Yes, Granny. It's just... Will learning all this really make me as strong as you? Of course not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius, right? Tell me who will win, guys. फारूजन will win और सिटलाली will win। यहाँ पे अगर दोनों के बीच में like debate हुई और दोनों एक दूसरे से like scholarly like फॉर्म में like एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो टेल मी गाइस हु विल विन, फारूजन जीतेगी या सिटलाली जीतेगी? क्या लगता है? हु इज सुपीरियर? I don't remember which character but someone had a whip as the skill and alt. वो यिनलिन थी भूल, बट मैंने इंग्लिश वॉइस पैक डिलीट करके जापानीज पॉइंट डाउनलोड कर लिया। करना ही पड़ा होगा, तुम एमटी में अच्छा थोड़ी लग रहा होगा तुमको आखिर को। मुझे लगता है बुआ पावर क्रीप को तो करेगा कैरेक्टर, अदरवाइज कैरेक्टर सेल कैसे होगा? बट देन ओल्ड कैरेक्टर जो आदमी निकाल रहा है वो यूजलेस हो जाएगा ना। थिंक अबाउट इन जेंसन में तुम लाइक प्रीवियस कैरेक्टर भी तुम यूज करते हो तो एटलीस्ट रन कर सकते हो किसी न किसी तरीके से मिक्स एंड मैच करके। इट्स नॉट लाइक दे आर कम्प्लीटली यूजलेस। विदरिंग वेव में लिटरली लाइक अगर तुम्हारा कैरेक्टर का डैमेज आज के टाइम पे अगर 30-40,000 से कम है ना, यूजलेस है। सिटलाली विन, फारूजान तो बस 100 साल की है, सिटलाली 500 प्लस ईयर्स की है। देन फिर सिटलाली लाइक तुम्हारे नाइडा से ज्यादा ओल्ड हो गई। You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them. कैसे हालचाल है? And picked up a few tricks that they didn't want to touch. It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. I wasn't the one who brought it up. Anyway, class is canceled tomorrow. Go have fun. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business and they practically tremble in fear.
Not the most fun way to go about living one's life, I'd say. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. By the way, नाइडा गॉड है, उसका क्या लेना देना है? नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। ये कौन लव वर्ड है? फिगर आउट कर लो डाउन गेमर, नाम तो दिख ही रहा है स्क्रीन पे। Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says. But I never forced myself. I never even got the chance to try before it was all over. Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a... Fun? I'm not sure about that. Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Jeez. That troublemaker's at it again. Auroron, my man, come inside and give me a hand. Why should I? I thought भाई ये being a हिल vet क्यों was रहा no है fun. बिल्डिंग? हेलो। नैडा तो विजडम एंड नॉलेज की गॉडेस है। मेरे को ये पार्ट बहुत बोरिंग लगा। मैंने पूरा स्किप कर दिया जैसे स्पैम क्लिक करके। ये ओरोरॉन का एक्चुअली बैक स्टोरी बता रहे हैं, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो सब यहाँ पे दिखा रहे हैं। सिलोनिन स्किप कर दोगे? मुझे चस्का चाहिए, बट सिलोनिन भी चाहिए। देखो सिलोनिन का रीरन हो जाएगा, लेकिन चस्का का रीरन सिलोनिन से बहुत लेट होगा। तो हकीकत तुमको अगर चाहिए सिलोनिन तो निकाल लो, तुमको चस्का चाहिए तो निकाल लो, सिलोनिन आ ही जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ आ जाएगी आराम से। मतलब 5.6 या 7 तक तो आ ही जाएगी आराम से। ये टट्टी गेम है, गेम का नाम टट्टी है, डाउन गेमर। Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in one piece. A part of me has always been missing. That's why the other spirits said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes and wait for death. Wait a second, इसके अंदर गुथ्रिड की लाइक वो है, सोल है। गुथ्रिड की अगर तुम चेस्ट पे देखोगे तो इट्स अ सिंबल फ्रॉम कांड्रिया। वो याद है कांड्रिया जो हमको वॉरियर्स मिलते हैं वहां पे लाइक कैज़म के अंदर, उनकी छाती पे भी सेम सिंबल है। तो बेसिकली दिस गाय इज फ्रॉम कांड्रिया, इट सीम्स लाइक। उसको कमांडर बोल रहा था, विच मीन्स वो भी कांड्रिया से होगा, लेकिन उसने बाद में लाइक नाइट विंड वाले क्या कहते क्लैन को ज्वाइन करा होगा बाद में। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। चस्का निकाल के सेविंग कर रहा हूँ, आई होप विन कर दूं वरना डायरेक्ट मुराता। ये जेंसिन को क्या हो गया है? ये वही हो गया जो दिख रहा है डाउन गेमर। हेलो अमन, वेलकम टू द स्ट्रीम। उफ स्पॉइलर, अरे चलता है अमन, तेरे लिए स्पॉइलर क्या चीज है? अरे कैप्टन इज अलाइव सिंस कांड्रिया। नहीं, वो कांड्रिया से ही है, बट वो अपना फेस छुपाया हुआ है कैप्टन, तो विच मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिज फेस प्रोबेबली। दैट्स व्हाई उसने अपना पूरा फेस हाइड कर रखा है हेलमेट के नीचे। अपने लोअर फ्रेंड के वर्ल्ड में जाके सबको वन शॉट कर रहा है।
फ्लैक्स कर रहा था कैरेक्टर, इसलिए तेरे को उसने अपने वर्ल्ड से किक कर दिया होगा की को, मुझे लगता है। आई एम लीविंग द स्ट्रीम, एंजॉय द स्टोरी। क्यों गुल, बैठो ना, देखो क्या दिक्कत है। It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I'm a warrior. Far stronger than a weakling like you. I'm not weak. There's just a limit to what I can do. And that's exactly why your fantasy is so ridiculous. You really think a useless thing like you can save the world? Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. इतना सच नहीं बोलना था। What if captain is Dan slip? Nope. That is not a what if situation, cool. Possible ही नहीं है what if situation वो वाली तो। No freaking way that is possible because उसका बॉडी शेप देखोगे ना, क्या कहते हैं, वो पतला पतला सा है डेन स्लिप, और ये कैप्टन थोड़ा बल्कि सा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है वो what if की। अच्छा कूल, ठीक है डेन प्लेबल होगा ना? हाँ होगा ना, वो लोग रिलीज करेंगे जब लोगों के पास प्रीमोजेम नहीं होंगे। Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here, no! I won't die here! Auroron! Mavuika ki voice. Inside Auroron's soul. Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end. Wow, slow-mo with speed effect. Very nice logic. His eyes are open! He's alive! भाई सिली कहाँ से आ गई यहाँ पे? Well done. You managed to do the impossible. What do you mean? Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroron as a comrade. He was helping to rein him in all this time. That is the only reason I had a chance to turn off the device. I'm fine now. ये सीली क्या है? सीली कैसे आ गई? इसके बॉडी के अंदर से निकली क्या ये सीली? Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. That's no easy feat. The worst appears to be over. I'm sorry for causing so much trouble. We can talk about that later. Our plan. It failed, didn't it? I'm sorry. We were so close.
कैप्टन का सबसे टॉलेस्ट मॉडल है मेल में, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे अलहाइतम से भी लंबा है। वाह सिटलाली के एंगल है। ये जेंसिन कम्युनिटी को चस्का का गेम प्ले क्यों नहीं पसंद आ रहा? मुझे तो काफी यूनिक होगा। टू बी ऑनेस्ट उतना फैंसी नहीं है, लाइक तुम्हारा मुलानी वगैरह का बहुत फैंसी टाइप से है, और ये सिलोनिन वगैरह का थोड़ा फैंसी टाइप से। चस्का का उतना फैंसी नहीं है, सिंपल है। आई होप कमेलिया भी अर्ली मिल जाए। सेम गोज फॉर मी अकीको, even though I don't want it. You saved my life, and now the debt is repaid. Auroron, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why I exist and why everyone always did so much for me. No one is born a hero. And no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. All I want is to find some more ways to make up for that. The answer you seek now lies before you. ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आया? You are the inheritor of my name. The hero from the masters of the Nightwind, who shall fight for this generation. Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can take a lifetime to truly discover who we really are. Like you, I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name. BD. इसका भाई एंशिएंट नेम का नाम बीडी है गाइस। ऑल्दो इन्होंने बीडी बोला है, लेकिन ये बीडी है एक्चुअली, बीडी नाम है इसका गाइस। एंशिएंट नेम बीडी जैसा पतला है ना, तो बीडी नाम दिया है इन्होंने इसे। इंग्लिश में इसका नाम डिवोशन होता है somehow। हाँ, ओरोरॉन को उसका एंशिएंट नेम मिल गया। It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. क्या लिखा है? हाँ, अलहाइतम से भी लंबा है, न्यूबे से भी लंबा है ये। नो वे अकीको होगा, पॉसिबल ही नहीं है। न्यूबे बहुत लंबा है, न्यूबे से थोड़ी लंबा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth, having foretold his own death. The omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sanhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. I am happy to see your plan advance one step further. It seems that my cry did not cause irreversible damage. ये किसकी वॉइस है? लेलाइन की वॉइस है। और इतनी सारी सीढ़ी क्यों घूम रही है यहाँ पे? मैंने देखा इंस्टा पे लोगों को कंपेयर किया। अरे लोगों तो बहुत कुछ बोलते हैं भाई, लोग तो इमेज को ऊपर खींच देंगे तो बड़ा थोड़ी हो जाएगा। हकीको पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। जोंगली और क्या कहते हैं न्यूब्लेड जितना बराबर ही होगा वो भी हाइट में। थोड़ी उनको वो क्या कहते हैं बिहीमत बनाना है उसे, कैप्टन को। कैप्टन की हाइट देख, लिटरली ओरोरॉन से थोड़ी सी बड़ी है। What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom?
I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human. So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul, but was ultimately expelled. However, this soul does not hail from that land, or the Night Kingdom. I knew it. Its origins remain a mystery to me. I fucking knew it, guys. I fucking knew it. This guy जो इसके अंदर था, इसके ओरोरॉन के अंदर जो आदमी घुसा था ना, गोतुल बोतुल जो भी नाम था, he is from कानरिया. मैं समझ गया था उसकी ड्रेस से देख के. And now I am confirmed कि कैप्टन भी कानरिया से है. It just he took refuge in the Nightland, in Nightwind क्या कहते हैं तुम्हारा ट्राइब, एंड देन उसके बाद फटू इसको ज्वाइन किया इसने, कैप्टन ने. I fucking knew it. These guys are from क्या कहते हैं कानरिया. I guess जब पूरा क्वेस्ट खत्म होगा तब एंड होगा, सब कैरेक्टर बातें करते हैं, देखते हैं. लेकिन सीली इतनी सारी क्यों घूम रही है, मुझे ये जानना है. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night Kingdom. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Shibelunke, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right! You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid. क्या लिखा है? मतलब कैप्टन का भी डायमंड से सेफ डाई होगा. पॉसिबल है. एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इसलिए चेहरे पे मास्क पहनता है, इवन दो सिर्फ हेलमेट पहन सकता है, बट वो चेहरे पे मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये तुम्हारे ये कानरिया वाले जितने रिलेशन वाले लोग हैं, इनका म्यूटेशन वगैरह रहता है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ा म्यूटेशन होगा जिसकी वजह से ये ऐसे रहता होगा ताकि कोई इसे देख ना सके, रियलिटी देख ना सके इसकी. पॉसिबिलिटी ये भी है. मैं एक लोकल एजेंट को डिफीट करता गलती से नाइट किंगडम के अंदर चला गया था. मोस्ट ऑफ द लोकल एजेंट शायद नाइट किंगडम में ही है. वहाँ एक क्रिस्टल नेल भी था. पॉसिबल नहीं है आगे को. वो क्रिस्टल नेल नहीं होगा, वो तुम्हारा बायोब रहते हैं. बायोब को तुम क्रिस्टल नेल समझ रहे हो. Such as rebuilding the ley lines once more, at the cost of my own existence. यूहुल टैकुल्थिन, ये क्या नाम है लॉर्ड ऑफ द नाइट का? बहनचोद किसने नाम दिया है ये? ऐसा लग रहा है रैंडम नंबर टाइप कर दिया कीबोर्ड से किसी ने. मैं बता रहा हूँ कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता इसे. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord.
In the ancient past, before we died out, we were also known by a different देखना name. पड़ेगा फिर आखिर को मैंने देखा नहीं है फिर हो सकता है But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Sealies. ओह अच्छा हाँ हाँ I remember सीली की स्टोरी ओके now it makes sense क्यों इतनी सारी सीली हैं यहाँ पे so sealies are angels. No wonder there are Sealies around here. A Sealie also helped us in the Night Kingdom. Few angels remain in Natlan, so the same is true of Sealies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Actually it's true पता है नेटलैंड पे पता है तुमको सीली रेयरली ही दिखी होगी कहीं पे तुमको और मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक कट सीन है जिसमें मैंने अभी तक देखा है नेटलैंड पे सीली नेटलैंड के बाहर हर जगह सीली है लेकिन नेटलैंड के अंदर सीली लिटरली एग्जिस्ट नहीं करती है तो आई थिंक दे एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ बायोब यहाँ पे नेटलैंड पे वो बॉस नाइट किंगडम में ही था वो सर्फ ग्लिच का कारण नाइट किंगडम के अंदर चला गया था समझ नहीं आया मुझे आगे का Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Shibalonke's will, and leader of Naplan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken. And the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power, say the word. And I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation, for the sake of overcoming the invasion from the Abyss, give me your orders. I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Why are you so pessimistic about this? Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. Knew it, guys. Knew it. I fucking knew it, guys. See, I knew it, guys. ये कैप्टन कानरिया से है. मैं समझ गया था यहाँ पे. Let's go, guys. समझ गया था मैं. मतलब मैं बोल रहा हूँ guys ये फटुईस के पास ऑलरेडी पता है. आई थिंक तीन कानरिया वाले कंफर्म हैं. ये तीन कानरिया वाले पीपल ऑलरेडी फटुई की रैंक्स में हैं. And rest are scattered. Conria? That's right. My family, my comrades, my homeland, we're all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. नहीं कारले चिनो कानरिया से नहीं है.
अनफॉर्चुनेटली कार्लिचिनो कांड्रे से नहीं है, वो फॉन्टेन से ही है. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings, their physical bodies the only connection to their former selves. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. My feelings were so strong. They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. क्या लिखा है? अर्लिचिनो का भी कांड्रिया से है आई गेस. उसके सिग्नेचर वेपन कांड्रिया का किसी रिट्यूल में काम आता था. हैं क्या? कमेलिया का स्किल का नाम है ब्रीडिंग. हो सकता है वो भी ब्रीडिंग करती होगी भाई. आकी को पॉसिबल है. मतलब फ्लावर की ब्रीडिंग कर रही है, बच्चों की थोड़ी ब्रीडिंग कर रही है ऑब्वियसली. आकी को Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to give up just yet. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. Even if you fail, you need only send someone my way. My offer still stands. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me, dazzling, like the sun. You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land, or its people? Pretty sure he wants to hear what you have to say, Traveler. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebear, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm willing to fight by your side. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. लोल राकी को काश वो माँ मेरे साथ ब्रीडिंग कर पाती. तेरे अंदर फ्लावर डालेगी, अपने टेंटिकल्स डालेगी तेरे अकी को. पता है तेरे को ब्रीडिंग की बात कर रहा है. Good idea. We need to explain the situation. तूने देखा था ना उसने क्या कहते हैं, कमीलिया ने क्या किया था उसके साथ, एनिमी के साथ, जब वो पीछे से अटैक करने को आता है उसको. I have a few more questions for the Lords of the Night. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium. हमारे क्वेश्चंस का क्या हुआ बेंचो? तो हमको टेलीपोर्ट कर दिया जब तो.
क्वेश्चन के माँ चुदा नहीं क्या नहीं है गाइस यही है आई थॉट क्वेश्चन की गांड मार ली इन्होंने कैन आई नॉट इंटरेक्ट विद सीरीज You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. They do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. They prefer to remain in the shadows as shades. Oh, it seems like अगर हमको उनका नाम पता चल गया हेवनली प्रिंसिपल्स का वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे हमारी गांड मारने के लिए It seems like the one you wish to know about. I call her the ruler of death. She helped Natlan establish the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the almighty heavenly principles. Oh, it seems like one of the heavenly principles ने नेटलन के रूल सेट किए हैं एंड उसकी वजह से बाकी हेवनली प्रिंसिपल या फिर उनकी जो लीडर होगी हेवनली प्रिंसिपल में भी कोई लीडर होगी उसको यहाँ पे डिस्प्लीज किया था उसने नाम लेने वाली थी लेकिन उसने सिर्फ हेवनली प्रिंसिपल्स बोला She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all but a select few. Self-pity? Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to... You come to me with many questions. And that you is should be interesting rewarded actually. for your bravery. Okay, that is interesting. I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? Even I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option against the Abyss. You come to me with many questions. Okay, इसको नहीं पता लूम ऑफ And you should फेट be क्या है rewarded for your bravery. about elemental energy and abyss. Ask. Phlogiston is Tavat's primordial form of energy. Okay. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy to develop a power to better counter the abyss. Okay. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? That explanation might take too long. Light realm and human realm. Realms भी हैं यहाँ पे. Okay. Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. You come to me with many questions. अच्छा इसने properly नहीं बताया लाइट realm और human realm क्या है यहाँ पे बस इतना बताया कि लाइट 7 कलर में like dissipate होती है तो उससे like elemental energy का knowledge आया है something like that. उसने पूरा कनेक्शन नहीं बताया हमें. कैमिलिया के हाथों से मरना सपना है सपना. क्या आदमी है बच्ची के हाथ से मरना है तुझे हैं अकीको? Ah, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl from the Masters of the Night Wind is absent. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. Young girl? What? Did I say something? You come to me with many questions. Okay, we are done here. Can I take one silly with me for reward, guys? कि ले जा सकते हैं कि ये ऐसे ही रहेंगी यहाँ पे घूमेंगी ये सिलीज. लग तो नहीं रहा क्लाइम कर पाएंगे हम. यप लग नहीं रहा है क्लाइम हो पाएगा. क्लाइंबिंग पॉसिबल नहीं लग रही है. Depart the remnants of the secret source.
सोलर नैब एंड तेरा नाम क्या है? The captain says a group of us need to stay behind to guard the source mechanism. Of course, you're free to come and go as you please. डैम ब्रो, स्टोरी तो अलग ही टर्न ले रही है। क्या क्या नई नई चीजें बता दी भाई इसने। We are finally reaching heavenly principles, guys. It seems like, क्योंकि अभी तक इनका उतना नाम नहीं आया था, अब रिवील करने लगे हैं और वन ऑफ द हेवनली प्रिंसिपल का नाम भी इन्होंने रिवील कर दिया है। ऑल्दो एग्जैक्ट नेम नहीं बताया और रूलर ऑफ डेथ बताया उसका टाइटल। Allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. We're back! Whoa. Seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's drinking. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Abarawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past! We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Night Wind, Aizu. बोला था मैं ये मास्टर्स ऑफ द नाइट विंड को ज्वाइन किया है ये बंदे ने आके नेटलैंड पे। I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy, but Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate, and, in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. बोला ना इसका mutated है guys skin. That's why ये mask पहनता है. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the prince. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Back then you said you didn't want to fight me. Was it really because of my sibling? Yes. You're the sister of the prince. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the prince saw me now, I doubt he would even recognize me.
As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. We could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. भाई स्टोरी तो अलग ही टर्न ले रही है भाई स्टोरी का अलग ही चल रहा है भाई यहाँ पे My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost, plain and simple. Speaking of Gnosis, what are you going to tell Tsaritsa? Her Majesty the Tsaritsa allows every Harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right! What happens when all 6 heroes are together? It will probably unleash some kind of power. The heavens were mentioned earlier, anything to do with that. We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Oh, इन्होंने God of Death को भी reveal कर दिया. उसका नाम Renova था. Emissary of heavenly principles. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? No wonder, वेंचोद. ओ भाई यहाँ पे अलग ही चल रहा है, guys. Story में. Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength, and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, Paimon feels even more exhausted. All right, let's head back. Now that we're working together, we'll need to coordinate our efforts. I'll leave a portion of my forces for you to command. That will definitely help relieve some pressure. You're sure they won't object? It's an order. I will make that clear. Excellent. I appreciate your trust. Okay. Okay guys, हमको forces भी मिल रही हैं इसकी.
बंदे ने भाई हमको अपनी आधी फोर्सेस दे दी भाई इसने। ये भी ठीक है। मेरे को लगा इसका नाम कोला होना चाहिए था, इसका नाम कोक होना चाहिए था, कोका होना चाहिए था, इसका नाम कोला होना चाहिए था। यहाँ पे कोका कोला बन जाता फिर, पता है इनके साथ। That hurts. Your wound needs time to heal. You need to rest up for a few more The days. monsters keep increasing in number. It's like something changed. It's definitely unusual, and we should all be careful. But don't worry too much. You have us. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Something wrong, Traveler? The feel of dread is getting stronger. Do we really have time to wait for the final hero to appear? कैसा लग रहा है Act 4? Interesting. There are so many details actually इसमें Act 4 में. There are literally so many details. My mind is blown right some now. relief. What rotten luck. My mind is literally blown right now. Like इतना सारा डिटेल है, वो भी सिर्फ अकेले Act 4 में, Act 3 में ये सब नहीं डाला इन्होंने, Act 4 पे भर दिया है इतना सारा इन्होंने। मतलब this is literally crazy. क्या है ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? Check out the area near the courier optional. Check out the area near Smiths. Check out the around nearby Burien optional. Smith यहाँ है ना? अच्छा सिलोनिन है यहाँ पे। अभी असली मजा बाकी है। Let's see Rex. Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly at the forge. Well-made weapons and shields are vital for the survival of our people. I know we're under a lot of pressure, but we can't compromise on quality. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't you all just take a break and I'll take care of the pieces. realize की होगी, अभी तक like हर रीजन में हम लोग like सिर्फ हेवनली प्रिंसिपल बोलते रहे। नेटलैंड इज द ओनली रीजन, नेटलैंड से हमारा लाइक हेवनली प्रिंसिपल्स में जो लाइक इन्वॉल्व हैं, या एमएसरीज हैं, या उनके जो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उनके धीरे धीरे नाम रिवील हो रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है, और डेंजर भी ये लोग रिवील कर रहे हैं कि डेंजर क्या है अगर हम उसका रियल नाम जान लेंगे तो इट फील्स लाइक नाउ स्टोरी अब पेस पकड़ रही है, एंड नाउ लाइक ये सब आर्कॉन वगैरह से हम ऊपर उठ चुके हैं, अब हेवनली प्रिंसिपल के पास जाने वाले डायरेक्टली नॉलेज के मामले में। जेंसन की नेटलैंड मिस मार्बल तूफान काम नहीं अब इसके लिए। Nothing I can handle. Just some rushed defective goods, that's all. Even the most skilled craftsmen make mistakes under pressure, and if you two want to avoid the same fate, you should really get some rest. वैसे ही यहाँ एक चॉइस टाइप है जहाँ आप हटुई या एक मदर डॉटर फैमिली को बचा सकते हो। ये स्पॉइलर नहीं, मुझे किसी कमेंट में पता चला है। You must be exhausted I don't know. too. Let's see. Don't worry. I like it that way. Okay, we are done here. हमारे पास वो है क्या, सिजल्स है क्या? मैं सिजल्स डाल देता हूँ। अब पड़ी है थोड़ी सी सिजल्स। चलो लेट्स सी अगला कहाँ पे हमारा है। बीरीन यहाँ पे है ना, ये बीरीन होगा आई थिंक। ये क्या है? ये बीरीन है क्या? नहीं, बीरीन इस साइड में है। देखते हैं, मिलेगा तो देखेंगे, अभी तो मिला नहीं हमको, मिलेगा तो देखते हैं।
Kanich, you made it back in one piece! Oh, these must be friends of yours. Well, head out then. Haha, it was a piece of cake. Those invasive pests are lucky someone called a truce. We would have burned them all to ashes. I appreciated the concern, Paimon. Despite Hazard's description, the situation wasn't so smooth. Captain's forces are all elite warriors. It was a tough fight. We were prepared to retreat at any moment. Now the Pyro Archon and the Captain are working together. Not the outcome I was expecting, that's for sure. Yeah, a lot happened while we were in the ruin. We'll tell you about it some other time. कैप्टनों से फाइट करनी थी यार. कैप्टनों से फाइट ऑलरेडी हो चुकी है ना सर स्टार्टिंग में. लाइक 5.0 में हो तो चुकी है फाइट. अब कितना फाइट करोगे तुम? लड़ते थोड़ी रहेंगे अभी से. ऐसा तो गांड मार के चले जाएगा अभी तो पीछे से. कभी कभी एनिमीज को भी फ्रेंड बनना पड़ता है. At least the Pyro Archon's plan advances a step further. This is the best outcome we could hope for. We really appreciate all your help. We have to keep pushing forward, Cebu, and I'm just about to head out. Actually, my drive is calling for messengers. We won't keep you then. Let's talk. Here, little Kinish thinks he can just leave without consulting the almighty Dragon Lord Kahola Azza. Hey, wait up. But Kinichi be like, I don't give a fuck यहाँ पे. अंदर जाना ना. हो सकता है बाद में फाइट हो ताकि वो जब कैप्टन जेनोसिस लेने आएगा ना तब हो सकता है फाइट हो हमारी. अभी तो नहीं है फाइट. Granny? What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now, where do I even begin? I'm sorry. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time, and the time before that. Pretty sure I apologized those times too. What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Apologize to yourself for risking your life. Okay. I'm sorry. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much. But I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a hero. I wonder, मेरे को पता मेरे को ये समझ नहीं आ रहा क्या ये लोग कभी मतलब कैप्टनों को मतलब इन नेटलन या फिर बिफोर या कभी ये कैप्टनों को उससे डैन स्लिप से मिलवाएंगे क्या? क्योंकि डैन स्लिप एंड कैप्टन एक दूसरे को जानते हैं, इन्होंने मेंशन भी कर दिया है. तो क्या लगता है कभी ये लोग मिलवाएंगे क्या डैन स्लिप को कैप्टनों से? Not too shabby, grandson. Did the traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You're not off the hook just yet.
I told the Traveler I was going to break your legs. And I meant every part of it. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello. Taking things out with your grandpa. Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. Just don't do anything like that ever again. I won't. Let's get together sometime. If Auroron Sounds great! We'll be there! पाइमन को लिटरली हम लोग कैरी कर रहे हैं. पाइमन को लग रहा है वो हमें कैरी कर रही है. कहाँ पे जाना है बे? अच्छा ऊपर का ही है. If you're done for the day, we should get some rest. Paimon has a feeling we'll need it for tomorrow. Yep, let's rest. You ready? Yep. Let's go meet the Lord of the Night. अब ये लोग लॉर्ड ऑफ द नाइट को मिलने गए हैं. बट इनके तो ये सपनों में आके बोलने वाले थे ना, लॉर्ड ऑफ द नाइट. ये मिलने के लिए क्यों गए हैं? This is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. Hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than staying awake. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler. But we ran into a problem. She's not from Natland, so there are no records of her in the Night King. I see. Mawika must hold her in high regard. It would seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this Traveler to be deserving? Speak your mind. There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. I would hear your opinions on the matter. She is special. She saved Kachina and devoted herself to helping us avert this disaster. Natlan owes her a debt. But that debt has not been repaid. And with an ancient name, we can at least guarantee her safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Hey, what? Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But it takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task. And creating one for an outlander makes it even more challenging. Still, if you're here, that means your mind is set. Yes, because I believe forging this name will be well worth it. We don't know how long we'll be able to hold back the abyss or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This
is a part of my duty. Baraka. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Siglali, the anxiety you feel, it's because you saw something, yes? Something you were not meant to see. So, you know about that too. What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? Death. How? A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained from the ruler of death. Considering its origins, the price of using that power is death. You're saying Malika is going to die in this war against the Abyss? Yes. Hi? I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये मवुइका ने दूसरे आर्कॉन्स की जाके हेल्प क्यों नहीं ली? हमारा तो कनेक्शन भी है उन आर्कॉन से, उनसे लाइक थोड़ी हेल्प ले लेते, इसके अगेंस्ट थोड़ा हो सकता है कुछ अलग सॉल्यूशन आया था। नेटलिन के अंदर रह के ही करना क्यों चाह रही है ये मवुइका, जिसमें वो खुद भी मर सकती है? Don't forget, Siglali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of death's power will allow Malika to triumph over the Abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but that is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Hi, sorry I am late, I was in bedding. It's okay, Mistaq, it's okay. Sometimes you have to enjoy life, you know? Malika knows about all this, doesn't she? Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. We shall have to wait and see, but I will curb my expectations. My time is running out. It is my... We won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, we'll find a way to keep you alive. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the Abyss, and in the end, all will cease to exist. When you consider all of that, extending my life is meaningless. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the Traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. Oh. With it, you can forge the ancient name you desire, and the
traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really. Thank you so much. Your thanks are unnecessary. This is the least that an angel can do. Time for you to leave. It's getting dark. Okay, कुछ तो scroll वगैरह दी है. Okay. I can't sleep with all the noise outside. Forget it. Let's go check it out. Shilon and Sitlali, is there a reason you're up so early? We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan. And eventually, it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see! वाह, ये क्या हुआ? क्या ये साइड क्वेस्ट रिकॉर्ड किया है क्या इन्होंने? BD all my sacrifice for beloved land. With your encouragement, Youthability tasted victory for the first time. The star that transcends destiny and greatest companion. Having traversed mountain and stream lakes and seas, it gradually come to know the world as you have your own mission. Your journey explore the mysterious island together shall forever sign in Umoja's heart. अच्छा, this one we did with Mulani actually. Mulani के साथ वो स्काई वाले आइलैंड को किए थे. In the word of Malepo, who was baptized of fire, everything comes at a price. ये this one we did for Kinich in his tribal quest. So tribal quest का भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है. क्रॉनिकल में तुम्हारा पिलग्रिम क्रॉनिकल पे तुम्हारा वो काउंट हो रहा है ट्राइबल वाला भी. The primal flame illuminates the world under the banner of King क्या? Kyongozi, humanity takes its first step towards the future. इन ये वाले अनलॉक नहीं है हमारे अभी. It seems like. Okay. 7 अभी भी अनलॉक नहीं है हमारे. Oh, it's the two of us! And a sun in the middle! भाई सिलोनेन पर हेल्प. सलमान अभी मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ. रिव्यू 25 लाइक्स के बाद है, तो पहले लाइक टारगेट हो जाने दो, फिर कर दूंगा मैं. या फिर रुक जाओ स्ट्रीम के एंड से पहले मैं कर दूंगा तुम्हारा सलमान. नहीं भी हुए तो एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंसेस लग रहा है. हाँ, और जितने एक्सपीरियंस हमने किए हैं वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं. बट हमने जो लाइक अपने वो छुटकू वाले ड्रैगन के साथ किए थे एक्सपीरियंस, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए हैं somehow. So it seems like he was supposed to be the part in the story of Natlan, but now it feels like he is not a part of this story. Then I don't know why हमारा वो ड्रैगन स्पेशल है, छोटू वाला. Oh, and that must be... It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just take it out and have a... Sounds convenient! It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift. It didn't come at a price, right? It didn't cost a ton of money, right? Oh, yeah. We'd feel bad accepting something like that. Oh, yeah, don't worry, you two. It's, you know, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Just... Well, if you say so. Thank goodness you are here. Abyss attacked again. It's really bad. The monsters are everywhere. We need to help. So soon? We just fought them off. We can figure that out later. Let's... It's time to fight.
Quest goal is in Netland here there. वही तो जा रहे हैं हम. कहाँ जा रहे हैं नहीं तो? कहाँ पे है quest हमारा? Surging darkness. ये क्या है? एंटर बैटल यहाँ क्यों आ रहा है? हाय, ये क्या मजाक है? यहाँ पे एंटर बैटल का ऑप्शन क्यों है? ये तो ऐसा लग रहा है कोई डोमेन ओवेन बन गया भाई. डोमेन के अंदर आ गए हम. डोमेन में फाइट वाइट होने वाली ऐसा लग रहा है. अबिसल कोरोजन लेवल. व्हाट द फक इज दिस? Beak and ley line status is stable. Active monster total deaths and incidents resolved. Session of canopy and cores are conveying battlefield intel. Use the marking on the map to assess the situation in various sectors, and due to ley line instability, teleport waypoint will be temporarily disabled. Location where support is needed will be marked as shown in the image. Press the to proceed there. Some emergency will occur at the some time. You will have to make choice. Battlefield will shift depending on your decision. Update your companion, and additional intel will also be marked on the map, and press view. I have no idea. Let's see. I see. I'll send reinforcements to those 2 locations. The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our warriors back and make sure they're... Understood. I'll spread the word. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes. It's not looking good. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now there are more monsters than ever, and the attacks... What about the scale? What areas are they targeting? All of Natlan. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? If things continue like this, then... We won't last much longer, I know. What we're seeing now is the desperation of the Abyss. It knows we're only 1 hero short. I don't have the strength to fight it right now. This is its best opportunity. You're saying we just have to hold out for as long as we... It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and conserving manpower. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already left to rescue them, but they'll need reinforcements. Leave that to us. We will head out there right All right. away. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind. As an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right. It's no like time to an lose. all-out Let's go. war यहाँ पे. Be careful, everyone. What about us? Where should we go? I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be able to hold out. Can I leave them to you? Of course. Thank you. The hot air balloon is over there. Chalo guys, it's an all-out war यहाँ पे. Outdoor rescue. All hotspots that require reinforcements are shown here. Okay. Okay. Ride the hot air balloon. ये क्या है? पार्टी सेटअप. ये क्या पार्टी सेटअप आया है नया? अच्छा यहाँ पे पार्टी सेटअप कर सकते हो तुम जाने से पहले. ये भी सही है. I like it actually. अरे एक सेकंड. हाँ धन्यवाद. And we're off! Hey, this thing is pretty convenient. ये बात करने का बना है यहाँ पे. ओह हमको पूरा नेटलैंड ट्रेवल करना पड़ेगा भाई.
अब खेल की शुरुआत हो चुकी है। Not only fast, but also भाई saves us पूरा a lot नेटलैंड of ट्रैवल करना energy. पड़ेगा हमें, it seems like. अबिसल कोरोजन 18% लेवल। हमारी हेल्थ वेल्थ भी जाएगी क्या इसमें? अबिसल कोरोजन में गाइस? हेलो? There are warriors fighting एक everywhere. और आ गया वहाँ पे। Seems like chaos in the making. Good thing for those battle reports. हम जाके फाइट नहीं कर सकते उनके साथ? कूद के यहाँ से ऑलरेडी? हॉट एयर बलून से ही जाना पड़ेगा क्या हमें लोकेशन तक? बेचारे वहाँ पे 4 लोग भी एनफ नहीं है वो कुत्ते को मारने के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। या ये लोग थोड़े बफ्ड लग रहे हैं, ये लोग थोड़े से बफ्ड लग रहे हैं। आई फील लाइक नहीं कूद सकता मैं, इट सीम्स लाइक हॉट एयर बलून से ऑलरेडी। Look, they must be trapped. Let's go help. कूदने तो दे। अच्छा ये खड़े नहीं होगा तब तक हमको जाने नहीं देगा। Reinforcements, thank goodness. I am coming. I'm going in! Here comes the catch. Busted. भाई हमारी अल्ट खराब करा दी यार इन चूतियों ने। हट, मेरे को लगा और आएंगे एनिमी। 4 लोग थे सिर्फ। मैं अल्ट क्यों चलाया? अब आप जंग के मैदान में हैं बिल्कुल। फॉर नेटलैंड फॉर नेटलैंड गाइस। There were just too many monsters. They just kept... At least we got here in time. You all should get going. I know, but it's not that easy. A lot of people were hurt. Our cart was also attacked, and now our supplies are scattered every... That's not important right now. We need to focus on I know, but these were medical supplies. It's them! Over here! ये कौन से ट्राइब वाले आ गए बे रेड कलर के? We came to help, but looks like you don't need it. Now we can head straight to the next location. What other areas need help? Here, take a look at messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natland to pass along the latest intel. If you see a messenger from the Scions of the Canopy, feel free to ask them about... Thanks! Now where should we go next? Seems like you can hold your own in a fight. So let's split up. Choose where you want to go and we'll take the rest. Still looks like they could use some help here, though. These supplies... It's all right. Don't delay your rescue efforts on our account. But if we stay here too long, the monsters might... What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you... We could help them. Active monster increase हो गए हैं और death भी increase हो गई है. Okay. Talk to Utru and Tapos. Who is Utru and Tapos यहाँ पे? ये उतरू बुतरू कौन है भाई? ड्रागो है, Tapos. Traveler, my mother's a doctor. I'm worried. She's... Of course. Thank you. उतरू बुतरू से बात कर दी। आप कौन है यहाँ पे? ये कोरियर है। यहाँ पे अभी पार्टी सेटअप का बना हुआ है। ये है। Do you get scared? चस्का के ट्राइब वाला है। अच्छा चस्का के ट्राइब वाला है। मारे जवारी नहीं आया ना अभी? नहीं अभी नहीं आया, बट वो नेटलिन में ही है। मेर जवारी एक्चुअली वी विल सी समडे। एक्चुअली मेर जवारी को नेटलिन में ही है। प्रॉब्ली आखिरी में आएगा मेरे को लग रहा है। Normal? Not at all. Oh, yeah. इनको लड़ते रहने दो, मर जाने दो भाई। नहीं, डेथ हमको कम रखनी है, जितना हो सके उतनी डेथ कम रखनी है हमें। अभी यहाँ पे हमारा वो है सिचुएशन आ रखी है। इट सीम्स लाइक ये क्या है? द एरिया कॉम्बैट इफेक्ट्स आर अननोन। ओके, वी कैन गो अप और वी कैन गो डाउन यहाँ पे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले इससे बात कराते हैं हम लोग। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई गेस यहाँ पे हमारे लिए। जाने देगा क्या ये गेम हमें? यू विल बी टेलीपोर्टेड बैक टू द एरिया।
मुझे फिर ये जानना है इनका क्या काम है यहाँ पे, ये इनका क्या काम है, गार्ड्स का क्या काम है? यहाँ पे बात करने का ऑप्शन आ रहा है, इनका क्या यूज है जब मैं जा ही नहीं सकता हूँ वहां पे? तो ये कौन है? कैप्टन है टाइटैनिक शैडो। हाँ ये कैप्टन है यहाँ पे ऊपर साइड में, कैप्टन भी फाइट कर रहा है। नहीं लेकिन इनसे बात करने तो जा सकते हैं ना हम। लेट्स सी, वो बात करने का ऑप्शन बनाया, ऑब्वियसली जा सकते होंगे। भाई थोड़ी देर रखा होगा इन्होंने। हाँ ये पता, तुम जब एक्सेप्ट कर रहे हो ना किसी लाइक लोकेशन के लिए, अगर सपोज तुम एक्सेप्ट कर रहे हो फाइट के लिए, देन यू कैन गो एंड टॉक टू देम यहाँ पे, इट सीम्स लाइक। What do you mean I am leaving the area? मैं लीव थोड़ी कर रहा हूँ, इनसाइड एरिया हूँ मैं। Where is this guy? Is this the guy? ये होगी प्रॉब्लम। ये भी नहीं है। Who is the guy इधर पे जो बात करने वाला है? ये भी नहीं है। गजब आदमी है भाई, ये लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, बात करने का ऑप्शन बना है। यू आर द केयर टेकर ऑफ द वॉर, मोस्ट अफेक्टेड एरिया पे जाके हेल्प करनी है। अब वो समझ गया मैं, बट इन पे बात करने का ऑप्शन आ रहा है तो आई फील लाइक कि वी हैव टू गो एंड टॉक टू देम, इट सीम्स लाइक। ओके समझ गया, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। हॉट एयर बलून थोड़ा ज्यादा ही स्लो नहीं है? ऐसा नहीं लगता इनको कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं जा रहा है? नहीं मेरे को लगा इंटेल वगैरह मिलेगी तो न्यू लोकेशंस वगैरह खोलेंगी तुम्हारी कॉम्बैट की, तो वो सब के लिए जरूरी है तुम्हारे लिए। Hey, Kenneth just ran past. He must be busy delivering messages. At least he didn't look hurt. Okay. वहाँ पे फाइट हो रही है, वहाँ पे जाना, इट सीम्स लाइक। यहाँ पे पार्टी सेटअप का भी बना हुआ है। हेलो, कैमरा का ही नहीं मुड़ रहा। This is it. Looks like a battle is in progress. Let's go help them. How much longer are these things gonna keep coming? We're reaching the breaking point. Great names echo. कहाँ गए बे? ए मोटे इधर आ। अबे अटक गया मैं। हेलो, अटक गया मैं। Shine down. अल्ट चलाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक मेरे को ऐसे ही मर जाएंगे ये लोग। All right. Teamwork is dreamwork. और कौन बचा है बे? Let's light it up. हाउ एयर बलून से Thank you so much. हॉट एयर बलून से came क्लास just ऑफ in क्लास time. किया था कहीं। और कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है डेविस, मजा आ रहा है। What's going on? Were other places hit? Yeah, seems like it. The Pyro Archon told us to be ready to evacuate. She warned us something like this could happen. You got here just in time. But what should we do about the wounded? This area was hit bad. We're housing the wounded in this house for now, but we're short on medicine. It's not easy for them to get around. We don't know what to do next. We're sitting ducks if we stay here, but... Thank goodness you're here, though. You You saved should us move all. to the section of canopy while you have a chance. You're right.
The monsters are gone. That will take time, though. Don't worry. Once we escort the first group, I'll call for reinforcements. That way... Let's help them out here for now. Then we can... Oh, there's a messenger over there. Don't... Okay. किससे बात करनी है? Check out the situation in the surrounding area. Optional है. ओ हाँ, वहाँ एनिमी स्पॉन हुए हैं. Quick, over here. Follow me. Look, someone's surrounded. Quietly now. हट जा. Thank you. They really came out of nowhere. Yeah, that was close. Just doing my part. Doctor, wait, do you know Tapos? He's my son. No, he's fine. He's just worried about you. He has... I see. अब समझ में आया How साइड about में क्या this? करना है यहाँ पे. साइड I'll साइड write to में him थोड़े-थोड़े and कहीं-कहीं promise हैं to team up सिविलियंस with the होंगे next group of फंसे हुए warriors I उनको come बचाना है across. हमें. I'll be safe. Sounds good. I'm sure he'll be relieved. Thank you for passing along his message. बीच-बीच में सिविलियंस होंगे उनको बचाना भी है हमें. ये सही किया है इन्होंने. पार्टी सेटअप का दिया है और हीलिंग का भी दे रखा है. All right. Thanks for your help. Hang in there, you... I think न्यू लोकेशन हमारी वो हो गई है. न्यू हॉटस्पॉट आ गया हमारा. एंड इट सीम्स लाइक कैप्टन मूव कर गया. इधर से कैप्टन मूव कर गया नीचे साइड में. सेलोनिन भी यहाँ से गायब हो चुकी है अभी. ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ दिस एरियाज कॉम्बैट इफेक्ट्स आर अननोन. बैटलफील्ड इफेक्ट्स. ओके, वो जियो वाले से जाके लड़ रहा है. अच्छा, हमारे यहाँ का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारी. इट सीम्स लाइक Geo damage buff, geo damage increase due to notable power and abyssal. Monster in this area have significantly higher HP. Okay. just certain area के certain buffs है तुम्हारे यहाँ पे. मैं यहाँ जाऊँगा, इसके पास जाऊँगा. यहाँ पे देख के आना है मुझे. इलेक्ट्रोमेज है, इसकी तो गेंद मार के आऊँगा. रुक जा साले की. आ रहा हूँ मैं. हेलो बहन, वेलकम टू द स्ट्रीम. कैसे हाल चाल है बहन? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो. This is the place. Let's go help. वाह, हमको टेलीपोर्ट कर दिया. Combat effects are unknown. There was a collapse deep within the Children of Echo's mine. Shafts to make things worse, lava also poured in and trapped many workers. Mabuika is about to go in solo to rescue them. Okay. A serious landslide has occurred out in the mountainous wild due to the intense monster activity at the summit. Captain and Fatui detachment led by him are seen clearing the monster, rescuing the injured. ये तो अभी क्लियर करके आया था ना मैं. ये तो अभी क्लियर करके आया था मैं. %33% कोरोजन है. वेट, मेरा मैक्स नहीं हुआ अभी. ठीक है, आओ बे. आ गया मैं. Hear the echoes of the valley. Things are about to get dicey. कहाँ गया बे? Everybody stand back! Torn to oblivion! अच्छा, पाइलॉन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. Illusion shattered! Let the mountain's veins boil! Teamwork is dreamwork! Here comes the catch! Shine down! के पाइलॉन गए यहाँ पे. There is no escape! जाने दे, एक ही बचा है.
बढ़िया। क्या चल रहा है गेम में आजकल? गेम में स्टोरी चल रही है और तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। coming. We finally have time to catch our breath. How is the situation with the children of Echoes? Fairly stable for now, but we've stationed ourselves here to act as a buffer. Fun fact: order of the events डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पहले जा रहे हो या पहले किसको बचाने जा रहे हो। हैं? ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स किस चीज को अफेक्ट करेगा डेविस? What about the monsters? Based on my experience, the monsters are attracted to two things. That's why we set up our front line of defense so far from the shrine. The messenger's here. Perfect. We were just waiting for the latest battle report. क्या ऑर्डर से? मुझे जानना है। We'll stay here. There's so much that needs to be if you're not in a hurry. That's a decision for the न्यू 5 स्टार अच्छा है क्या? हाँ, शी इज रियली गुड आई वुड से। टॉक टू चिमली। बताओ चिमली क्या करना है? By the way, I think if you've got some time, I'd appreciate. All right, ओके, इसने कुछ नई इंटेल दी है। कोई नई लोकेशन हमारी अनलॉक हुई है, इट सीम्स लाइक बैटल के लिए। चिमली से तो बात कर ली थी, चिमली कहाँ चला गया? एक सेकंड, चिमली उधर कहाँ गया? अच्छा इधर है चिमली, नीचे गया है कहीं तो। आ गए अपीसल पाइलॉन्स आ गए। बहन के लोड़ो आ जाओ। Busted. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. गया पाइलॉन गया। All right. Letting brave names echo. Quietly now. Let's light it up. Shine down. All right. Busted. thanks to you, we managed to clear out the threats in the पुल करूं surrounding या area. डीपीएस के लिए वेट Let's head करूं? back. गारंटी है मेरा एक विश में मिलेगा। पुल कर लो क्योंकि सी इज अ रियली गुड सपोर्ट। लाइक काफी अच्छी सपोर्ट है वो बैन। करंट जो 5 स्टार है, सी इज अ रियली गुड सपोर्ट। तो निकाल लो, उसके बाद तुम्हारा मन है कि तुम किसके लिए जाना चाहते हो। और वैसे भी अगर काफी टाइम से नहीं खेला होगा तो बहुत पुल्स पड़े होंगे तुम्हारे पास। मैं तो हर किसी को बोलूंगा पुल कर लो, बट नंबर ऑफ बैनर्स जो आ रहे हैं सोच समझ के करना पड़ेगा उसमें। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वहाँ पे लाइक वो मैटर करेगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। हेलो, कहे का एरिया लेफ्ट कर दिया भाई? अच्छा 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 अच्छा, माय बैड, देखा ही नहीं मैं। Here's the current situation. If you have the strength. बिल्कुल, बताओ कहाँ जाना है नेक्स्ट? मिशन एरिया क्लियर्ड, लेट्स सी। कचीना से बात करने का आ रहा है एंड वापस से स्टेडियम जाना है। ये कैप्टन बाहर क्यों चला गया एरिया से? हैं? कैप्टन एरिया के बाहर क्यों गया है? और यहाँ पे नीचे साइड वाले वो चले गए हैं हमारे। इट सीम्स डेथ इंक्रीज हो गई हैं। एरिया के बाहर ही निकल गया भाई वो कैप्टन। अननोन है इसके एरियाज के इफेक्ट। पुल तो बहुत है बट एक्सप्लोर नहीं किया, टाइम नहीं मिलता है। तो आराम से खेलो, जल्दी क्यों करना है? Looks like it really is getting too dangerous for people to stay out in the wild. जल्दी खेलने का कोई फायदा भी नहीं है। Situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep fighting.
Game's up. Fun's over. Gotcha. Torn to oblivion. Where is pylon? अच्छा pylon पीछे होगा यार। साले अल्ट को मार लेते थे पूरा मेरे को मारने से नहीं दिया अल्ट तुम लोगों ने। Hear the echoes of the valley. Here comes the catch. Busted. Teamwork is dreamwork. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. अर्लिचिनो चाहिए था। अर्लिचिनो आएगी एक्चुअली नेक्स्ट पैच में आएगी शायद। अर्लिचिनो रीरन होने वाला है अर्लिचिनो का। स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे अबिस के अटैक इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। कैंप्स में लोगों को बचाने की डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वैसे वैसे लोग मरने लगेंगे मगर कौन मरेगा कौन बचेगा वो आपके चॉइस चेंज करेगी। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स वैसे वैसे चेंज होंगे। क्या मतलब कि स्टोरी चेंज हो जाएगी मेरी आखिरी वाली? कोई नहीं अभी नेक्स्ट पीएच में शायद अर्लिचिनो आ रही है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से शायद रीरन होगा नेक्स्ट पैच में उसका। अर्लिचिनो का रीरन होगा ना डेविस नेक्स्ट पैच में कि आके चली गई है ऑलरेडी? Every person counts. Yeah, it really feels like we're running short on people everywhere. It's so deep. Not that Paimon's complaining, it's just... What a stupid question. You know the answer. You're just too afraid to face it. Like a puny bug clinging to the pipe dream. Okay, that's enough out of you! This may be one of the few times Azo has a point. On the bright side, we can pat ourselves on the back for saving all those civilians and bringing them here. Fear is useless anyway. If the endless surge of monsters scares you to that you still have to fight. There is no other choice. अच्छा mines में lava alone makes the area dangerous. Now it's crawling with monster. Without her power, she is just ordinary vision wearer like rest of us. I would be lying if I said I wasn't worried. Yeah, she always seems so confident. Plus, she told us you can only become the Archon by proving your strength. It's true, she certainly has a safe manpower. She can handle the dangerous areas almost entirely on her own. Alright, I'm tired of this conversation. Either take the break or get moving already. Good idea. Maybe we can see if the people around here need anything in them. Looks... There are a lot of people in here. Could they all be refugees? ये फटुई भी बाहर निकल गया है एरिया का है सेव करने के लिए है। Oh, it's you. Hey, you made it. Sure did. Plus, we managed to deliver the medical supplies to the stadium. Okay. अच्छा हाँ मेरे को अभी याद आया कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आई थिंक इंसिडेंट वाले एरियाज थे वो गायब हो गए थे। मैं अगर दूसरे इंसिडेंट लोकेशन पे गया था तो I managed to accept my fear, but I still want to ask you one last thing. If I die, do you think anyone will remember me? तो फिर मत निकाल बहन तेरी मर्जी है बट शी इज क्रैक्ड एक्चुअली दैट्स व्हाई लोगों ने पुल किया है। शी डज एवरीथिंग एक्चुअली। Yeah, please do it. My life? Got it. Thank you again for... Okay, यहाँ ऊपर है रेस्ट फॉर अ व्हाइल। टॉक टू व्हाट? टॉक टू हु? माया हुला। ये कौन है? माया हुला कौन है? आई डोंट सी एनी अदर मार्कर यहाँ पे। हु इज माया हुला? There is no escape.
All right. अच्छा ये माया हुला. Oh, my son wrote back to me and said things are under control on it. Anyway, I followed. My age means I can't charge to the front line. Okay. ये लोगों को हम लोग ने बचाया था. And फिर एक और आ गए क्या? नहीं आए. रेस्ट कहाँ करना है? मुझे ये बताओ पहले. रेस्ट कहाँ करना है? रेस्ट कहाँ है बे? अच्छा इधर है. Wanna get some rest, traveler? अभी चिवरेज के साथ बहुत फास्टर डैमेज दे रही है क्लोरेंट. देगी ना वो? देगी ना. क्लोरेंट को उस तरह से डिजाइन ही किया गया है. बट अर्लीचिनो के साथ प्रॉब्लम ये है कि अर्लीचिनो लाइक खुद के अलावा किसी और से हील ले ही नहीं सकती है. तो दैट इज द प्रॉब्लम विद अर्लीचिनो. तो तुम चिवरिस यूज भी करोगे ना तुमको फायदा नहीं मिलेगा. आधे ज्यादा बफ नहीं मिलेंगे क्योंकि आधे ज्यादा बफ जो चिवरिस के रहते हैं उसमें तुमको थोड़ी सी हील लेनी पड़ती है स्किल से. एंड दैट यू कांट गेट इन केस ऑफ चिवरिस विद अर्लीचिनो. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम आई गेस. बाकी तो ठीक है. टॉक टू किनिच. बताओ किनिच कहाँ हेल्प चाहिए. सिचुएशन इज स्टिल क्वाइट ग्रिम. हियर टेक अ लुक. What's going on? It's an abyssal pylon. Locked up. Hey, got him. All right. Letting praise names echo. Target acquired. भाई किनिच C5 है क्या? C3 किनिच है. None can compare. I'm going in. Measly. Game's up. Time's over. Quietly now. Now you shall perish. There are too many of them. They just keep coming. Illusion shattered. All right. Hear the echoes of the valley. I got him cornered. Claim these souls. The dead would blaze. Bring it. मैंने बॉम्ब कैसे उठा लिया गलती से? भाई मैं मर रहा हूँ भाई. Help. Things are about to get dicey. Teamwork is dreamwork. All right. Let the mountain flames boil. Damn Kinich. C3 Kinich. Damn Kinich. नाइडा का वेपन क्यों चाहिए तुमको? अर्लीचिनो को निकाल सकते हो. नाइडा का वेपन क्यों चाहिए? लोल. लगता है न्यू पाइलॉन बनने वाला है वहां पे. ओ वेंचो द पोर्टल आ गया है. पोर्टल आ गया है. लोगों का मरना चालू हो गया है. Do you think डर लगता है मेरे को है?
situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and empty. बेचारे को 1-star weapon दे रखा है और रॉड पहन रहा है. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame! Archon's on the case. ये क्या करने वाली, यूज करने वाली है क्या? विजन अपना गायब कर दी उसने. हेलो, ये क्या पोर्टल वोटल क्या बन गया है? What was that? ओके, स्टोरी नहीं चले चेंज होगा, मगर ये क्वेस्ट मिल रहे हैं हम लोगों को बचाने के लिए. वो आप चॉइस डिपेंड करेगा कि कहाँ जाओगे, वैसे लोग मरेंगे या बचेंगे. अब इस अटैक इंटेंसिफाइड बढ़ गया है. अब देखो कौन मरेगा या कौन बचेगा, देखते हैं. The physical embodiment of pure dread and destruction, haha, that black pit of despair will eat you all alive at long last. Laugh all you want, it's gonna eat you too. So is that the source of abyssal power? It emits the huge amount of abyssal energy. I have to get closer and look at that thing. It's already too late. Get to the place mentioned in the battle group. I have a feeling things are getting very bad very quickly. There is no time to lose. The fact that Deadpan Kanichi is this nervous just goes to show how serious this really is. Oh, let's go. The disaster's really happening. हाँ वो दिख रहा है, वो पोर्टल उसी के थ्रू बनाया है. अब इस वाले के थ्रू नंबर ऑफ कैजुअलिटी भी इंक्रीज हो गई है, मॉन्स्टर भी इंक्रीज हो गए हैं. और अभी लेकिन अभी भी ले लाइन स्टेबल और अबिसल एक्टिविटी वीक है समहाउ. हालो ने ब्लीड लगा के माँ होती है मेरी कसम से. ओके, हमारा अभी ये क्या एरिया है? The abyssal power spreads from this place to all over Natlan. The monsters are here are endless. This attack is inexorable. Okay, which means ये वाले एरिया को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं. It seems like. What is this? Immense power of abyss has taken some ineffable form. It now hangs up high in the staining sky of the Natlan Black, spreading endless calamity upon every inch of still breathing land. We can go down to save like इस वाले एरिया को, या तो we can go up यहाँ पे. This is an emergency. The result will deepen the weather and not use provide immediate support. Okay, and what is this one? Monster. ये कौन सा monster है? ये कौन सा monster है इधर पे? मैं इधर जाएगा. Sorry, companion वो हैं, trapped हैं. हाँ वही में देखते हैं. Whoa! Those Saurians are fighting each other! No, wait, something's wrong. They're abyss monsters! Let's light it up! Alright. Letting brave names echo! Quietly now. All dead ना? इन्होंने ऑलरेडी इनको मार दिया है, देख रहे हो? इनको मार दिया ऑलरेडी. ये कहाँ से आ गया? ये क्या न्यू एंट्री आई है? टेनेबोरस मीफीफ्लोरा.
An abyssal monster that has descended to this world from the deep dark depth of the twisted and alien world. The Tenebrous flora can mimic various phenomena and deploy void board in combat. Some of its attack can cause stable attrition that after a time will cause your active character to lose HP. Use a specific number of elemental attack to destroy the creature's board. A Night Soul aligned elemental attack can break through its defense more effectively. I think Here comes the catch. Let's light it up! I'm going in! Inazuma shines eternal! You cannot survive my rider's burst, my friend. If you think you can, you don't. Over here! Hello, ASUS. New Archon quest, yes. Yep. Hey! Wake up! You! Wake up! They're all dead. Oh no! Were we too late? We were on our way to the stadium with our Saurians when that dark entity emerged in the sky. They fought till the end to protect us. And now... You should keep moving. This is no place to hang Right. around. You need to get to the stadium. I guess. Oh, I'm so sorry. Truly I am. May the Wyab watch over your souls, now and forever. Paimon ro rahi hai. Huh? This is no time. This is war. Paimon knows, it's just... It hasn't fully sunk in yet. But anyway, right now, let's focus on getting them to the stadium. ये बढ़िया Archon quest है यार. With any luck, there'll be an update waiting for us there. हर Archon quest ही अच्छी है वैसे तो. हर quest ही Archon quest ही बहुत अच्छी बनाई इन्होंने. सबका अपना अपना है ना. ये नेशन ऑफ वॉर था तो ये लोग अब प्रॉपर वॉर दिखा रहे हैं हमें. ओके, पार्टी सेटअप की जरूरत नहीं है आई गेस. ये क्या है? You rescue survivor here who whether they have human or saurian burn with desire to defend their home. 54% हो गया है अभी हमारा. एक सेकंड. आउटसाइड एरिया abyssal creature have broken through the flower feather clan defensive line with the civilian yet evacuated with brutal implication for the battle. तो flower feather clan यहाँ पे है हमारा. ये क्या है? This place is wholly consumed with abyssal power. No life can endure here. None dare to approach. I wonder Netlin वालों ने outside Netlin people से like वो क्यों नहीं लिया, support क्यों नहीं लिया इस चीज में. They she could, if she wanted, she could have taken help from other Archon इस मैटर पे. And I'm pretty sure Raiden तो एक स्लैश में खत्म कर देती सबको छील मारती. I wonder उसने हेल्प क्यों नहीं लिया किसी से. इनकी अब फिर से फाइट चालू हो गई बेंचो. अभी तो करके क्या था हेल्प इनकी. अब क्या करना है? कोरियर से बात करनी है. Need the latest battle, but as I understand, if you're free, कैजुअलिटी फिर बढ़ गई लेकिन एक्टिव मॉन्स्टर उतना ही है अभी भी. एक सेकंड. लेलाइन स्टेटस डेंटेड एंड अबिसल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है. दिस इज बैड एक्चुअली. ये तो है, ये क्लाउड इंक्रीज होते जा रहा है इवन दो मैं बचा रहा हूँ लोगों को फिर भी. चलो ये नेक्स्ट लोकेशन चलते हैं यहाँ पे. देखते हैं, देख लेंगे, डरते थोड़ी हैं. Yeah, teamwork is dreamwork. Quietly now. There is no escape. इस वाले को मारना है, पीछे वाले को. Veins boil. Things are about to get dicey. Busted.
Go in! Torn to oblivion! It's you. You came. अब महान हो ना इसलिए बचा रहे हो. अच्छा ये अच्छा डिटेल था क्योंकि नेटलाइन अबाला अपना प्रॉब्लम अपने से ही सॉल्व करना पसंद करते हैं. वो ये लोग आउटसाइड नेटलाइन को कोई कनेक्ट नहीं रखते हैं कुछ कल्चर की वजह से. कल्चर की वजह से नहीं है, ये नाइट किंगडम से कनेक्शन की वजह से है. बट स्टिल आई डू थिंक कि शी शुड आस्क फॉर हेल्प. लाइक नहिडा एटलीस्ट नॉलेजेबल है, शी कुड हैव फाइंडेड अदर वेज यहाँ पे हेल्प करने के लिए. और उसके पास तो ले लाइन से इंटरेक्ट करने का और कनेक्शन भी है. There are so many ways they could have done actually. विजन वेयर को बुला लेते हैं. विजन वाले एक्चुअली स्ट्रांग है पीपल, तो विजन वेयर को बुलाते हैं. नॉर्मल पीपल फाइट कर रहे हैं यहाँ पे. After you left, some of them started evacuating the civilians, while the rest stayed behind to keep guard, but they're all dead. We're done for now. The Abyss will attack again any minute. And then I'll... Hang in there. We'll think of something. Like what? None of the civilians have any combat experience. The monsters are gone for now, right? Get back inside! I know it's dangerous. That's why I can't... Same. Huh? What is this? Asking another Archon damages their reputation. I mean, when it comes to Nelson, I don't think so. Reputation matter करती है. क्या कहते हैं सुभाषिस? Can you spare some equipment for us? वेंटी का भी आर्कॉन क्वेस्ट आने वाला था ना. आया क्या वेंटी का आर्कॉन क्वेस्ट? व्हाट डू यू मीन वेंटी का आर्कॉन क्वेस्ट? I've never been in a battle before, but I'm young and I can hold a weapon. That's got to count for something. And I used to fight in the pilgrimage when I was a younger man. If you hand me a spear, I think the old muscle... There are others willing to join us as well. I persuaded them to fight. We can't let the blood... We can't watch on as our heroes lose heart. And we can't let them... We don't have much equipment left. Okay. Take with a few extra fighters. We should just about be able... Everyone who's fighting? Yes, sir! Got it. Take our hot air balloon. You can use it to get to the station. No need. You'll have other people to save. We're taking up arms so that you can focus... Okay, well... Try going that way. That's the route we came from, and there weren't too many months. Thank you, both. You've been a huge help. I am devastated by the deaths of my brothers in arms. But if their sacrifice means anything, I have to live on. Story quest 2 you mean? Final Archon quest 20 का. Final Archon quest नहीं होगा. Character story मान सकता हूँ Ben. Archon quest नहीं होगा. और आर्कॉन क्वेस्ट ऑलरेडी मॉन्स्टर्ड का आ गया है. अब मेरे को लगता है आर्कॉन क्वेस्ट नेक्स्ट जो आएगा वो आफ्टर मे बी स्नज़नाया वगैरह आएगा. बिकॉज मॉन्स्टर्ड की स्टोरी वॉज लाइक मैं बोलूँगा बहुत छोटी थी कंपेयर टू दीज स्टोरीज. ल्यूए वगैरह की स्टोरी, क्या कहते हैं तुम्हारा ये इनाजुमा वगैरह की स्टोरी को अगर देखें तो उनसे कंपैरिजन में काफ़ी छोटी थी स्टोरी. तो मेरे को लगता है अभी बहुत बचा है. आएगा तो वो बाद में आएगा. बहुत लेट है, बहुत टाइम है उसमें. We're not going down without a fight. Just be careful. Thanks. We will. Okay. देखो कितने सारे लोग मरे पड़े हैं भाई इधर पे. ये अच्छी डिटेल है कि तुमको उनकी बॉडीज के ऊपर से चलने नहीं दे रहे हैं. इट्स लाइक दे आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम गोइंग देयर. यहाँ पे ये अच्छी डिटेल है मेरे को लगता है इस चीज में. It's a sign of respect for them. देखें कहाँ है नेक्स्ट. यहाँ पे हमने रिजॉल्व कर दिया है इशू. कॉम्बैट एरिया अननोन दिखा रहा है. इट सीम्स मुलानी वाले एरिया में भी अबिसल एनर्जी बढ़ने लगी है तुम्हारे. ऊपर जाना है. Doesn't look like we'll be able to find anyone here.
monsters are all that's वैसे left. पूछा नहीं कैसे हो आप? अब क्या पूछो सुबह तुम आते तो हो नहीं, भूल भाल गए हो हमें, अब पूछ के फायदा थोड़ी है। पूछा तो उससे जाता है जो एटलीस्ट आए। Hear the echoes of the valley. ये बहन के लौड़े सारे वो लगाते हैं, रीडिंग लगाते हैं। I hate these guys. Off we go. Yeah. हो गया तुम लोग का ब्लीड लगाना? बकचोदी हो गई ब्लीड की? हैं? ये कहाँ से आ गया एक और? यहाँ पे फटुइस भी मरे पड़े हैं। All right. Busted. Shine down. Let's light it up. Hey, got him. Nope. I will be honest, but really time नहीं मिलता है। सैटरडे संडे करता हूँ, उस दिन तो फ्री रहता होगा सुबह से, उसमें भी बोला टाइम नहीं मिलता है। हीलिंग बॉन्ड ऑफ लाइफ करते हैं ये मॉन्स्टर। हीलिंग बॉन्ड लाइफ करते हैं ये मॉन्स्टर, मतलब? The latest intel said the children of Echoes need support too. Let's head over. यहाँ सब मर गए हैं। Everyone died यहाँ पे। See? कोई सरवाइव नहीं कर पाया। Obviously कैसे सरवाइव कर पाएगा? ये लोग साला हेल्थ चूसे जा रहे हैं तब से बंदों के। कैसे बचेगा आदमी इनसे? Obvious ही बात है, मर ही जाएगा इनके अगेंस्ट तो। चिल्ड्रन ऑफ एकोस पे जाना है। अभी नेक्स्ट इट सीम्स माइनिंग एरिया पे जाना है। हीलिंग नहीं होने देते हैं एनिमे, नहीं हीलिंग होने देते हैं बट हीलिंग चूज एचपी चूज These करते हैं। warriors are struggling. Quick, let's help them. I am coming. Look at me, I am coming. पाइलॉन पहले पाइलॉन प्रायोरिटी है। Letting brave names echo. Everybody stand back. Here comes the catch. There is no escape. Now you shall Now perish. die everyone. Die everyone. Die. अरे भाई डैमेज कर दिया उसने। Let the mountain's veins boil. Torn to oblivion. Nice heal कर दिया उसने पूरा। Shine down. This is the second time you've had to come to our rescue. I'm a little ashamed. There are survivors. Go back. बेचारों को बचाया नहीं। कौन से survivors? कुछ नहीं था आसपास एरिया में। कुछ होता था वो ऑप्शनल दिखाता वहाँ पे। सुबह से ऑप्शनल नहीं दिखा रहा था, which means वहाँ पे कोई भी नहीं था। कौन से survivors को बचाने को बोल रहे थे तुम? कोई नहीं था भाई वहाँ पे सुबह से पिछले वाले एरिया में। Thanks to your efforts last time, we managed to fend off the abyss here. Even after तुमको क्या लग रहा है that जो was मैप में appeared in मारकर the आ रहे sky? हैं? मैप में जो ऐसे चेहरे बन के आ रहे हैं वो सर्वाइवर्स हैं? नहीं, वो मैसेंजर्स हैं। वो मैं भी पहले सोच रहा था कि सर्वाइवर्स हैं, नहीं वो मैसेंजर्स हैं। सर्वाइवर्स एक्चुअली तुम जहां फाइट कर रहे हो ना उसके आसपास वाले एरिया में ही होंगे। But at this point, I think we're gonna have to cut our losses. This base is... Yeah, everyone needs to stick together. Best to अरे I All did right. it. Full Time quest. to evacuate. बाद में आएगा There's a भाई, volunteer सुबह से अभी unit नहीं here होगा। too. So first I need to ask them what they want to do next. For anyone who still wants to fight on the front lines, the Children of Echo... Those are the... As of this moment, the Children of Echoes are reasonably well defended. Now then... वाह, सॉरियन भी हाँ कर रहा है। Did I not make myself clear? But if Natlan is destroyed, will there still be a home for us to return? If anyone wants a future, it's on them to go out there and grab it. Period. No one wants to be that person who sat back and hoped for the best while other people were giving their blood for our nation.
Very well. For Natlan. For Natlan. वाह, सॉरियन भी बोल रहा है फॉर नेटलैंड. You heard them. अरे This होता तो means डेविस we'll भी all देखते be ना. going to डेविस support the को children भी of नहीं दिखाया. Echo's garrison. तेरे को ये अकेले कैसे दिखा है सुबह से? वो मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख हम एक लोकेशन में 3-4 बार जा रहे हैं, तो एक बार हो सकता है मैंने कर लिया होगा, तो तेरे को लग रहा है उस टाइम का ही लग रहा है कि होगा अभी सर्वाइवर्स वहाँ पे. वो जो सर्वाइवर तेरे को जाते हुए दिखे थे ना बाहर साइड, उनको हमने ही भेजा है उस रास्ते से कि वहाँ पे क्या कहते हैं वो रास्ता सेफ है, तो तुम लोग स्टेडियम निकल जाओ या कहीं और निकल जाओ, ट्राइब साइड निकल जाओ. वो हमने भेजा था, उनको बचाना थोड़ी था हमको. Great! Well, you all seem in good spirits, so that's encouraging. अच्छा है क्या? But still, please be नहीं, careful. C1 चाहना चाहिए. C1 के बिना तो आज के टाइम पे जरूर हुताओ निकालनी भी नहीं चाहिए C1 के बिना. एंड आज के टाइम पे वेपन भी चाहिए हुताओ को. हुता वेपन भी रहेगा तो और अच्छी बात है तुम्हारे लिए. Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. इसने कुछ देखा? It seems like ट्रैवलर है. होल बड़ा हो गया क्या? ये क्या है? ये कौन उड़ के गया? Shoot! That creepy abyss thing is raining down a dangerous-looking substance again! That's over towards people of the Springs territory. From what I've heard, their defenses have been substantially weakened by the Abyss invasion. Then let's head over and check on them! होल बड़ा हो गया. गांड मार दी किसी ने उसकी होल की. होल बड़ा हो गया. ये तुम इनको सर्वाइवर्स बोल रहे हो ना? नहीं बचाना है ना, ये लोग जा रहे हैं क्योंकि एरिया के बाहर जा रहे हैं. ये लोग एरिया के बाहर हम नहीं जा सकते हैं. सी आई कांट गो आउटसाइड द एरिया. हमको टेलीपोर्ट कर देगा वापस. यही चीज मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. वो जा नहीं सकते उन्हें अभी. दे आर गोइंग बाय देयर ओन. आई कांट गो विद देम. मैं आ रही है. Alright. माँ मैं आ रही है. रुक जाओ. What the? Paimon can't believe it! ये क्या है? अरे हेलो. Game's up. Time's over. Quietly now. There is no escape. Inazuma shines eternal. क्या करना क्या है? Too darn strong, I'm so useless! Oh, why isn't anything working? At this rate, the Abyss is... There's just one battle report left, and it gives a long list of places where the dangerous substance has been dropping. This is the first report we've had in ages, which means the messengers... But there's nothing we can do about that. Even if we don't find any survivors, maybe that's strange. But one woman and one girl survived because of those hoodies. Leyline status disordered. Abyssal activity dire. 74% हो गया. अब बताओ यहाँ पे कोई भी सर्वाइवर नहीं है. अब किससे बात करूँ मैं? यहाँ पे यहाँ तो कोई भी सर्वाइवर नहीं है. सब मरे हुए पड़े हैं. मैं अबिस नहीं कर पा रहा हूँ. 36 स्टार प्लेयर हूँ. फोन प्लेयर हूँ. पैनल से 36 स्टार किया. ओनली बैनेट एंड सांगलिंग से सोलो. नाइस. नाउ वी हैव टू गो इस वाले एरिया में. ऊपर कैसे जाऊं मैं? बेंचो ऊपर तो दे दिया ना. ऊपर कैसे जाऊं मैं? इधर कुछ है क्या? एरिया एक्सप्लोरेबल लग रहा है somehow.
कुछ है क्या इधर पे? अच्छा ये हो सकता है इधर ट्रैवल करके जाएगा। मैं हॉट एयर बलून चढ़ूं कैसे? हैं? कैरेक्टर डाउन? What do you mean character down? इधर से बना है। Start. अच्छा ऐसा डेविस। पैनल होता क्या है लेकिन? पैनल है क्या? हैक्स वगैरह? ओह अच्छा डेविस, अच्छा समझ गया मैम। नीचे वो देखो नए नए वो आँख खुल गए हैं। There are too many monsters. There are just too many. It's beyond anything we've seen before. पाइमन डरती का है हम है ना? डरना क्यों है? हम है तो यहाँ पे। हमें तो डर क्यों है? हम मारेंगे सबको, पेलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? Our traveler is strong. मजाक थोड़ी है। So Basis भी like regret कर रहा है चीजों को लेके हैं। I mean it's game की choices है, तुम क्या कर सकते हो उसमें? Some things will be different, some things will not. अब सपोज मैं वो आंटी और आंटी के बच्चे को नहीं बचाता तो वो लोग मर जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट चॉइस होती है। वहाँ पे रोते हुए दिखता बच्चा, उसका रोते हुए दिखता कि आंटी मर गई है करके। थिंक अबाउट दिस। ये देखो यहाँ पे ऊपर भी बंदे मरे पड़े हैं पट्टियों पे, देख रहे हो? सीजन ऑफ कैनपी भी लोग मरे पड़े हैं। इट सीम्स सीजन ऑफ कैनपी भी इन्वेड हो चुका है। अच्छा लॉल, कैसा लग रहा था? लेकिन वैन सबको इजी लग रहा होगा क्योंकि सोलो कैरेक्टर टच करते ही एनिमी मार दे रहा होगा। भाई मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर घूम रहा है इधर, तो आ रहा है। रुक जाओ सालो, बदला लेंगे सबसे, एक एक चुन चुन के बदला लेंगे हम। ये देखो मॉन्स्टर्स घूम रहा है इधर पे। ट्राइब पूरा लाइक डिलीट हो गया। अल्ट शिफ्ट अल्ट डिलीट कर दिया इन्होंने पूरे ट्राइब को। वहां पे ऊपर पे सीजन ऑफ कैनपी के पूरे ट्राइब को अल्ट शिफ्ट अल्ट डिलीट मार दिया इन्होंने। ये चॉइस डिपेंडेंट था, अच्छा डिटेल था। ये तो भाई लिटरली आर्कॉन वार वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अब इस वापस इन्वेड कर रहा है क्योंकि पाइमन show me your true power. Show me your true power, Paimon. Don't worry. Let's do this. It feels more realistic this way. हाँ ठीक है। It's a good detailing, I would say. I would say this is a really good use of map and the story. बाकी यहाँ पे देखो कुछ कुछ एरिया देखो खाली खाली सा है। नीचे दिख रहा है मेरे नीचे पैरों के नीचे देखो कितने सारे एरिया खाली है। देयर कुड बी एनिमीज रोमिंग अराउंड हियर जस्ट इन केस मैं बोलूंगा। ये छोटी छोटी डिटेल लाइक मेक्स बहुत डिफरेंस। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पैदल चल के जाता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग हॉट बलून यहाँ से यहाँ तक, तो आई थिंक आई कुड हैव फॉट दीज एनिमीज ओवर हियर। मेरे को ऐसा लगता है। क्या डेविस क्या लगता है? मैं सही बोल रहा हूँ ना? मतलब कि अगर मैं पैदल चल के जाता तो आई कुड हैव फॉट दीज एनिमीज यहाँ पे जो यहाँ पे हैं, क्योंकि ये सीजन ऑफ कैनपी वाला एरिया देखो अंडर जोन है। तो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन फाइट दीज गाइज। अगर तुम पैदल जा रहे हो, पैरों से जा रहे हो इधर तक, हॉट बलून लेके जा रहे हो, तो यू कैन सी देम डाई। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा
भाई देवैन लोल उससे तो पूरा गेम ही बर्बाद हो जाएगा अगर हैक वाले हैक्स लगा लिए तुमने तो आई न्यू कि हैक एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लोग वो हैक्स लगा के ही अकाउंट सेल करते हैं फिर बाद में AR 35 36 पे 36 से AR करके लाइक स्पाइरल अबिस करके बट आई डिडंट नो व्हिच वन तुमको कैसे मिला वो हैक्स वैसे किसी ने बेचा था क्या तुमको Bring it. Busted. Take it easy. डोंट वरी मस्ता मैं तेरे को बचाऊंगा डोंट वरी मस्ता मैं तुमको बचाऊंगा मैं आ रही है Everybody stand back. Illusion shattered. Quietly now. Shine down. Letting brave names echo. Let's light it up. Busted. Move out! You've got to get पेड out of हैक्स है here! मेरे फ्रेंड के पास है तो तुमको ऐसे फ्री में दे दिया उसने पेड हैक्स लोग कंप्लेन कर रहे थे कि नेटलैंड और नेशन ऑफ वॉर में वॉर कहीं खाली टूर्नामेंट है और पोकेमॉन पकड़ने का आप देखो जेंसन ने दिखा दिया वॉर और क्या भाई अपनी बोलेगी कम्युनिटी अब कुछ नहीं बोल पाएगी कम्युनिटी हाँ ये कि वॉर में जो छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग मिसिंग है उन पे कमियां निकालेगी बट आई थिंक क्या कर सकते हो उसमें लोगों का काम है गलतियां निकालना तो बैठे बैठे हैं बच्ची जिंदा है गाइस Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? हमारा ट्रैवलर तो प्यूरिफाई कर सकता है ना इन चीजों को ट्रैवलर ट्राई क्यों नहीं कर रहा Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. But this thing, no one's seen anything like it before. It's like a part of that sky demon's body or something. Whatever it is, it seems like it can spawn abyssal pylons, and with them, a never-ending stream of abyss monsters. We're just no match for it. उसने ही किया था मेरा बेस अच्छा At this point, retreat looks like our best option. We're fighting a losing battle here. The stadium is our only hope. That's where the sacred flame is, which seems to be the one thing that well of abyssal energy is afraid of. The Pyro Archon is guarding the flame. As long as that continues, we still have hope. Don't worry, मैं आ चुका हूँ अब बचाऊंगा सबको What's this? Water and some snacks. You look like you need it. I'm guessing you've been supporting the fight all over the map? Sounds like we got enough people to hold our own here. And it's high time you took a break. Why don't you sit down and gather your strength for a minute? It's true. We've been fighting pretty much non-stop. Traveler, you must be Right now there is a bigger thing to worry about. As long as that dark monstrosity remain unbeaten, gathering together might actually put a target on Children of Echo's back. Oh, you're right. Well, then guess we'd better go. It's your decision if you want to set off right away. ठीक है ये लोगों को मैंने बचा लिया है. I can't do anything about this though. Let's see next location कहाँ है. चिल्ड्रन ऑफ एकोस जाना है अभी एक सेकंड देना गाइस 1 shot 1 kill
नहीं बचा पाओगे आप, वो 6 हीरो का वेट करना पड़ेगा। बट टू बी ऑनेस्ट आवर ट्रैवलर इज सो स्ट्रॉन्ग एंड कैन बिल्ड ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट। तो ट्रैवलर तो अकेला ही लाइक बचाना चाहिए लाइक हर चीज़ को। जो यूट्यूबर सोलो डैमेज शो अप करता है ना, वो उनको न्यूक डैमेज समझ लेना, वो पीनल से ही कर रहे हैं। 1 शॉट 1 किल। हाँ तो वो देखा वो पीनल से लाइक 4-5 लाख मार रहे हैं वो लोग, मिलियन मार रहे हैं सॉरी। तो रहेगा ही ऑब्वियसली, हैक्स रहता है वो। मतलब जिसको पता है वो समझ जाएगा, जिसको पता नहीं है वो उसको यही लगेगा वाओ वाओ करेंगे वो लोग बैठ के। वन टाइम यूज में तुम्हारा अकाउंट हैक भी नहीं हो, बैन भी नहीं होता ना, क्योंकि डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मॉन्स्टर हर जगह है यहाँ पे। वाह 1 शॉट 1 किल। These are all the new weapons जो नए उसमें आए हैं। It's you guys. Things are bad here. Something fell out of the sky that's impervious to our attacks. Not just here, we ran out of these already. Pascal gave the order to everyone to evacuate. Celine and I stay behind. It's a good thing you did, otherwise we might not have made. Kachina, she and I can deal with the remaining monsters and abyssal pylons. You should go catch up with the rest of the group before your Got it, I'll leave right away. They need all the help they can Stay get. safe, Kachina. Come on, let's get this. Okay, it seems अभी यहाँ पे हमको क्लियर करना है। I think clear out monsters presence लिखा है। नहीं जा सकते हम उधर, नहीं जा सकते हैं। What do you mean नहीं जा सकता मैं उधर? अच्छा एक साइड से करना पड़ेगा। Bring it. Things are about to get dicey. All right. I'm going in. Illusion shattered. Torn to oblivion. He's dead. He's dead as well. एनर्जी रिस्टोरेशन के पार्टिकल्स होने चाहिए थे, पता है इधर। वहाँ नीचे भी फाइट चल रही है, वहाँ नहीं जा सकता मैं हेल्प करने। यहीं जाना है क्या? उधर नहीं जा सकते हैं। It seems like. All right. ये क्या लेजर आ रहा है? ये क्या लेजर है? ओ भाई इन्होंने इसका फॉर्म भी ले लिया। Hear the echoes of the valley. Let's light it up. Shine down. भाई मेरे को अटका दिया, बहन के लोड़ो हट। यार ये क्या चूतिए हैं एनपीसी, मेरे को अटका दिया इन्होंने। क्या फाइटिंग लोकेशन है इनकी? Inazuma shines eternal. होता है, कोई नहीं बहन। अच्छी बात है, नॉलेज होना चाहिए कभी कभी। कभी कभी नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारा अकाउंट बैन नहीं हुआ, वो बड़ी बात है तुम्हारे लिए। वो बड़ी बात नहीं है नॉलेज। बड़ी बात ये है तुम्हारा अकाउंट बैन नहीं हुआ है, तो यू शुड बी हैप्पी आई गेस। इन्होंने अच्छे ब्रिज अप कर दिया, यहाँ पे ब्रिज डाउन था ये वाला आई गेस। अबिसल पाइलॉन है इधर पे। There is no escape. All right. Let the mountain's veins boil. Everybody stand back. Here comes the catch. Now you shall perish. Evacuation is complete. Prepare to fall back. Okay. कहाँ जाना है? फॉल बैक कहाँ करना है? All right.
Yep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. Yeah, this is, good. We can evacuate shortly. तू मर गया था डेविस, इससे मर गया था. I appreciate your help. How are things out there? Pretty dire, I bet. Extremely dire. Some of the things I've seen, I don't know if I'll ever be able to get them out of my... I've never witnessed a full-scale abyss invasion before. I mean, I'd heard stories about the sky being painted black, but I always thought that was an exaggeration. Malika has witnessed this all before, so she knew better than anyone the terror and despair an abyss invasion would bring. Yeah, and despite that, she's still facing it head-on. We've had to abandon our homes and chase the dying light of day. And maybe the only time we'll see the dawn again is in our dream. But as long as there's even a sliver of hope, I am not gonna give up. Me neither. We should catch up with the group. इनको एनर्जी पार्टिकल डालना चाहिए ताकि अल्ट आके रखे लोगों की, पता है? तब तो मजा है, ऐसा अल्ट चार्ज करने में आधा टाइम लग जा रहा है मेरे को. Great, you made it here unscathed. Those indestructible abyss things have dropped by all of tribal territories. So it wasn't just children of echoes, even collective Palantir was affected. They are furthest away. But worst affect reason was the Flower Feather clan. He said it's completely destroyed over there. What? Isn't that Chaska's tribe? She said she was gonna take... Kinis didn't stop to catch his breath before leaving to Corsair Stadium. He said he's gonna try and assemble the team, go support them. But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. There is no spare manpower. At this rate, it won't be long before even the stadium is indefensible. And with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there too. Then there'll be a battle on a scale much larger than anything we've seen. On the bright side, at least my old injuries aren't playing up at the moment. Means I can actually... The crux of the issue is that the heart of the Abyss itself has joined the invasion. That's a power we just can't match. Heart of the Abyss. I have every faith in the courage of our people. The Natlanese will never give in to despair. But still, the fact is, our lives are more fragile than our spirits. नहीं, वो रेस छोड़ने वाला एनिमी से लड़ रहे थे. उस सॉरियन ने अटका दिया, मर गया. उसके एक अटैक से इतना गुस्सा आया, मरने को मन कर रहा था. हाँ, तो वो लेजर डैमेज बहुत अच्छा करता है भाई. डेविस, तुमको क्या मजाक लग रहा है? वो मशीन वाली चीज एक्चुअली अगर तुम उसको लाइक इस नेटलिन का स्पेशल इफेक्ट अगर यूज नहीं करोगे ना, तो वो ही हैज अ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, प्लस उसका हाई डैमेज है. वो डैमेज तो कुछ भी नहीं है जब वो एग्रेसिव हो जाता है ना, तो उसका बहुत इंसेन डैमेज है उसके बाद तो. और Traveler Paimon knows what you're about to say. We have to go to the Flower Feather clan. Yeah. Paimon sure is getting tired Until from all Pyro this Archon flying, succeed but in her plan, it doesn't every matter, life is wherever worth saving. We'll leave the Children of Echoes to you guys. Flower Feather clan, hang in there. We're coming. Wait, don't tell me Act 4 यहाँ पे खत्म होने वाला है, क्योंकि Flower Feather clan तो अभी तक गेम में आया भी नहीं है. If there was ever a time to push ourselves to the limit, that time is now. यहाँ हमको सिर्फ टेलीपोर्ट करके देगा. Wait, over there. It's Chaska and Queechy. ये Flower Feather clan है. इतना था. Based on Kinich's intel, Kinich wishes to return to the stadium with Sacred Flame to gather people and come to rescue a tribe and abyssal attacks. In chaotic movements such as this, it may be almost impossible to allocate manpower beyond the stadium's defense. Traveler! Over here! Hurry! All right.
मर जा। All right, letting grave names echo. बिना पता बिना 2 या 3 नेटलन कैरेक्टर के इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन गेट लाइक जो तुमको चाहिए है यहाँ पे रिजल्ट। बहुत टाइम लगता है। जस्का हेल्प कर दे थोड़ी सी, क्या चले जाएगा। फिर बन गया वो चूतिया और अल्ट भी नहीं देते ये लोग करके ऑलरेडी। मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। रिचार्ज है क्या कहीं पे? Illusion shattered. अब अल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ऐसे ही मर जाएगा ये। नहीं जाओगे वहां, नहीं जाओगे बोला था ना। ये इतना सा एरिया इन्होंने फ्लावर फेदर क्लैन बोल रखा है। डोंट टेल मी कि विची मर गई है। नो वे शी इज अफेक्टेड बाय अबिसल एनर्जी नाउ। What happened to her? She's covered in abyssal energy. I'll help her. Please, save her. No way she is going to die. How's that, Koichi? Any better now? I'm going with Zitlali first. Land character 5-star character. She is adorable. हाँ लेकिन तेरे को तू जितनी बार उसको खोलेगा, उसका कैरेक्टर पेज खोलेगा, उतनी बार तेरे को चिल्लाती रहेगी। अच्छा लगेगा तेरे को सुभाषिस? Koichi! Koichi! Chaska, I used to think Mom and Dad were crazy for adopting you. I was the younger sibling, but I always felt like it was my job to help Mom and Dad take care of you. I thought I could say guess I was pretty full of myself, huh? Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. We'll be at the stadium. The abyssal contamination is gone now. Just... I was always nagging you to slow down. Stop rushing headlong into things. I just didn't want anything to happen to you. I worried about you so much. But now, the fact that you survived an abyssal contamination was a miracle. But it also left you in a constant state of agitation. The fact that we became family was another miracle. Don't tell me she is going to die. Koichi mar jayegi abhi. Worrying about you all the time, it feels like I just... No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. Granny Italy I is feel cute terrible there. because I really did want to get along as a family. It might take me some time, but I'll find a... It's okay, Chaska. No need to apologize. I get you keep forging ahead, never slow down, and never hold back. Spread your wings and fly free, like the fiercest kukasaur in the sky. Show the world who the bravest flower feather warrior is. Because that's who you are. And... बड़ी इतने से अबिसल कंटामिनेशन से मर कैसे गई? She was a doctor actually, लोगों की जान बचाती रही और वो खुद नहीं बच पाई। Koichi! Koichi? क्या ये ट्रांसफॉर्म होने वाली है क्या अबिसल पावर में?
I think she is okay now. Let's give her some space while she cools down. Poor Koichi, yep. Poor girl. We never gonna see her again in the game, sadly. What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then a split second later, it disappeared. Chaska managed to rein it in. She was इसलिए चस्का का एनिमो विजन होल्डर से बना दिया क्रायो से. क्या बात कर रहे हो? विजन चेंज हुआ है उसका डिवाइस. She was like nah, never mind, not now. वो तो भाई रिप ओपन कर देगी वो पोर्टल को भाई. वो कोइची मर गई क्योंकि Koichi did say that Chaska needs to let off steam now and then, or she'll end up losing herself. But this time she wrestled just like back Koichi control. always hoped. If only we were faster. Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for. We could have gotten to her earlier, then you could have treated her before. Wait. What's happening to Chaska? इसको भी रिकॉग्निशन मिल गया लगता है चस्का को. How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning, and each step forward has been an agonizing one. Maybe she would have been better off embracing her pain. But her journey goes on, and one question looms large in her mind. If she could rise above the layers of pain and ascend over the dark clouds of her mind, what then would she find? Maybe the glorious light of the sun, or maybe a dark, empty void. Here comes a 6-0. There is only She was one not a way 6-0. to find out. She needs to spread her wings and soar to new heights. That is the true meaning of life. You are from 500 years ago. My life's suffering shall be my epitaph, to remember the pain I endured, and finally transcended. Let's take Koichi somewhere safer. You and Chaska takes Koichi back to the stadium. Everybody knows Koichi कितनी important थी. Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice, Archon, we need to hurry. Time for this war to end. Head to the center of the stadium to witness the gather of heroes. Take it easy. Thank you for the healing, I guess. What's the status? Do we have enough medical supplies left? There's the not review times Gum. We're almost out. I know. All right, well... Ah, it's you. Glad to see you're both all right. Acha. I'm your uncle. How is your son doing? No idea. Communications have dried up, but I trust...
I'm so grateful, but I'm worried she... May the Wayub grant you peace, and may songs be sung. We give thanks for the gift of your life and ours. And I trust him. और कोई है क्या बात करने के लिए यहाँ पे? चलो स्टेडियम के अंदर चलते हैं. It's you two. So many people. You were right. I shared your thoughts with my... So once again. You're okay. So you made it to safety, huh? Not exactly. Guess the... I feel very lucky ये वो लोग to हैं be जिनको alive. मैंने बचाया था वहाँ पे We हट के have to पास. keep ये अंकल surviving. लोग आए थे So हेल्प we करने can... के लिए. You और guys better make sure you... ये लोग अंकल लोग हैं हेल्प करने के लिए आए थे. बेचारे यहाँ छोटे छोटे सॉरियन भी अपना वो ले रखे हैं, शेल्टर ले रखे हैं. अब इसकी वजह से ये मुलानी वगैरह नहीं दिखे हमें वे. The Saurians, that officially makes me the most... हाँ देख लिया सरेगी, कर देंगे. अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है, रुक जाओ. Everyone, are you ready? A bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. So ignite the spirit of victory for me. May no further lives be lost, and no one else may to suffer the loss of their loved ones. ये जमीन क्रैक्ड क्यों हो रखी है already? As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Stone engraved in echoing peaks. Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. Anointed with flames, she shone with the light of 1,000 stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. पता है ये कितना हिलेरियस है. जितने यहाँ पे हीरोज प्रेजेंट हैं उसमें सिर्फ ये अकेला बंदा है ओरोरॉन जो कि बेचारा 4 स्टार बनने वाला है. बाकी सारे कैरेक्टर यहाँ पे 5 स्टार हैं. नहीं नहीं अच्छी वॉइस है, क्या बोल रहे हो? कम कम चलेगी. यो सलोने ने निकाला नहीं निकाला मैंने फ्रैगर. बीजेएमआई में तुमने कहा हमको वो किया है, स्पॉन्सरशिप कहाँ दी है फ्रैगर? सबसे बढ़िया यही दिख रहा है ओरोरॉन, बट सैडली यही अकेला 4 स्टार है पूरे ग्रुप में. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. By past fuel and present flame, life marches ever on. We will answer to the fire for all our deeds. My life's suffering shall be my epitaph.
to remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages! Our moment has finally come! और रॉन के साथ injustice हुआ है यार. We unite as one! Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! नाइस, पूरा सन ही खड़ा कर दिया भाई वहाँ. In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! Halloran. The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! Fight! 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 हाँ, छोटी बच्ची भी 5 स्टार है. सची वो और रॉन के साथ हुआ है. गड़बड़ कर दिया इन्होंने. भाई इन्होंने नाइट के आगे सन खड़ा कर दिया पूरा. देख रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन. बेसिकली वो होल ने नेटलिन को कवर कर लिया तो नाइट हो गया. इसने मबुइका ने सन खड़ा कर दिया ताकि लाइट आ सके. कोई नहीं, जलो जलो फ्रैगर. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame? That's right. No more casualties. It's time to wipe the enemy off the face of the earth. And to reclaim our lost territory. This is for all those who gave their lives for Natlan. Let's go. We'll come with you. Bye, Mom. ऐसा लगा किसी ने भाव नहीं दिया है. Traveler. I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this counterattack might never have been possible. Probably best not to think about that. More importantly, how are you feeling now? मैं बता रहा हूँ, कैरी तो हम लोग को ही करना है फाइट में. जाके. Not really. But now is not the time to deal with it. In the spirit of VUCA, I have to rise above it. The conflict and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger, and make me the person Koichi believed I can be. I have faith in you. Alright, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlan after we're through with... Take it easy. I'm coming. Bring it. ये पता है इन पे नाइट सोल बर्स्ट इस्तेमाल करना है. Like the worst thing I would say. Inazuma shines eternal. Let the mountains veins boil. फाइनली हटाया मेरे को. मार. अरे चूतियों. रैंडम मादर हटा अटका दिया वहाँ. भाई अल्ट ही नहीं आती, पता है अल्ट ही नहीं आती, यही प्रॉब्लम है. अल्ट ही नहीं आ रही. ये देखो क्या मैं घंटा मारूं, अल्ट ही नहीं आ रही है मेरी. Torn to oblivion.
Look how powerful she is now. It's borderline unfair. Hear the echoes of the valley. Go in. मेरे को डबल हील लगानी पड़ रही है, बैरेट मर जाता। ये मेरे को पता है नाइट सोल बर्स्ट सबसे बुरी चीज लगी है, पता है टू बी ऑनेस्ट। कितना धीमे धीमे बढ़ रहा है वेंचर बिना नेटलन कैरेक्टर के, फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको पाइलॉन को किसी चीज का। There is no escape. Bring it. Letting grave names echo. Use my power to destroy the abyss tumors. Got it. Thanks for the backup. अच्छा इनको अबिस ट्यूमर्स बोलते हैं ये लोग। अच्छा ये न्यू लोकेशन आ गए हम। कहाँ जाना है हमको? रुको पार्टी चेंज कर रहा मैं। मैं इसको चला ही नहीं पाऊंगा फिर अगर मैं उसको ले लूंगा तो। एनमो डाल नहीं सकता मैं यहाँ पे। एक स्पैनिट डाल देते हैं, डबल हीलर रहेंगे एटलीस्ट। I have high hopes for this. एनर्जी की दिक्कत नहीं रहेगी इस वाली टीम पे। कहाँ जाना है हमें? अच्छा स्पिरिट वे को बोर्ड करना है। Oh, did you guys see that huge fireball? ये मेरे को लगा जाना है पैदल पैदल कहीं जाना है। Sorry, Mulani. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. Miserable drags of the abyss. Hal's coming in way too hot. Is it possible to mute him? How dare you insolent concepts? Done. उसने म्यूट कर दिया, मबुइका ने म्यूट कर दिया ऐसा को। लोल भाई, मबुइका के पास ऐसा का कंट्रोल है। हमको पाइलॉन तोड़ना है, पाइलॉन प्रायोरिटी है। हेलो जनरेट नहीं हुआ। All right. Let the mountain's veins boil. It feels so easy in this team, पता है करना। Shower me with praise. Let the world. The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. Where? ये चूती है, वो भी नहीं जनरेट कर रहा है और भी नहीं जनरेट कर रहा है। भाई मेरे को लगा आगे जाना है, मैंने सर्कल नहीं देखा था मिनी मैप में। डेविस कतई ज्ञानी आदमी बन रहा है उससे आर्कॉन क्वेस्ट करने के बाद है। वापस से स्पिरिट पे जाना है आई थिंक। Kachina, over here. I'll send you up. It'll be quicker. This chatting between them feels so unserious. Yep. They are chilling ऐसा लग रहा है। उनके लिए ऐसा लग रहा है सबसे इजी चीज है ये करना। Okay, everyone's safe. Granny, please go on ahead with the others. I just need some more time, I promise. I won't hold things up. Oh, Roron! Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit! It's too dangerous. वो अभी भी अपने वेजिटेबल्स को बचा रहा है। और रॉन, no wonder he's a 4 star.
लोगों को बचाने की जगह। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं चैट भी देख रहा हूँ क्योंकि। अच्छा अब हम डायरेक्टली पाइलॉन्स को अटैक कर सकते हैं। यप, मबुइका की वजह से हम डायरेक्टली पाइलॉन्स को अटैक कर सकते हैं। That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to put the whole army of monsters. Everyone, death is now off the table. So charge! Let's give them everything we've... ये अबिस मॉन्स्टर डिक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं? अब डिक्रीज हुए हैं, पहले इंक्रीज दिखा रहा था। 29%. The children of Echo's territory is secure. All monsters down. I'll go deal with the abyss tumor. All good here at the people of the springs too. Masters of the Night Wind are also safe. Should I go support the... Things are still pretty rough over there. I'm already en route. Already? But you were just at the stage? Yeah, well, you have no idea how long I've been itching to bash some heads in. Oh! Fair enough. Ian-san, what should we do about the Collective of Plenty? Your home's a long ways away from the stadium. हम लोग एक दूसरे को सुन कैसे पढ़ रहे हैं यहाँ खड़े होके? मुझे ये जानना है। इन हिंदी कचीना मैं तेरे को ऊपर फेंकती हुई तरह। अब वो लोग चिल करेंगे ही, क्योंकि क्यों ना करें, वो लोग मर ही नहीं सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है। वो ठीक है, बट सीरियसनेस नहीं है बिल्कुल, ऐसा बोल रहा है थोड़ा सा। Oh, no need to worry. I just heard from Rasyad. She says they're sick. Sounds like all regions are secured. Abyss forces are weakening. Yeah, their only game plan was to outnumber us, and that ain't gonna work now that we have the Ode of... Hold up, Abyss is sending seizable unit towards the stadium. I guess they realize the Ode of Resurrection is game changer, so now they're gonna try to destroy the sacred flame. We ain't gonna let them get away with that. Friends, more abyss tumors have descended, all near the stadium. Let's split up and take them out. We need someone to guard the main entrance. Allow all me. Right. This is the final battle. Settle down. ये देख रहे हो कितना कम डैमेज हो रहा है वो उसका। यही चीज मैं बोल रहा हूँ, मबुइका चलो एक बार में डिस्ट्रॉय कर रही है, मेरा तो डैमेज भी नहीं हो रहा भाई उन पे। थैंक यू मबुइका फॉर वेपराइजिंग देम। Be sanctified. कहाँ है बे? और आ गया। Settle down. Let the mighty be humble. भाई न्यूब्लेड क्या डिलीट कर रहा है मादा जो, ये क्या कहते हैं न्यू राइडन टीम से हो ही नहीं रहा था। लाइक उनका लेक गेजेस इतनी जल्दी बढ़ रहा है ना, क्या ही बताऊं मैं। अरे अटका फंसा दिया। Let the mountain's veins boil. Everybody stand back. Yoo-hoo! Let my name echo in song. The tides beckon. लाइक उनका गेज ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक है। न्यूब्लेड के चार्ज अटैक्स हैं। अबे यार इसके ये हाइड्रोक्स दे दिया इन्होंने यहाँ पे। अब मैं इसके सीड तोड़ने में टाइम लग जाएगा। तोड़ मबुइका इसके सीड तोड़ मार दिया। ये कहाँ से आ गए? तुम लोग क्या कर रहे हो? Teamwork is dreamwork. Strike a pose. Time to shine. Bow your head.
एक्चुअली मबुइका के फायरवॉल से एक बार में डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना. Now Mabuika is gonna die, guys. It's time for Mabuika to die. वाह, मुक्के से लेजर बीम डाल दी बंदे ने, उसने, वो भी उसने शील्ड बना दी. वो रेड कलर के क्रिस्टल वो उसकी याद दिला रहे थे. याद है वो एनिमी की. Kamehameha. Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. How come Mabuika didn't die? अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई है. अभी कुछ बड़ा होने वाला है, इसके वजह से फील आ रहा है. क्योंकि अब I'm pretty sure आर्कन क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ है. तो आर्कन क्वेस्ट का भी एक पार्ट और बचा है. तो भाई मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ बचा है. अब इसका वापस अटैक आएगा, मेरे को ऐसा फील आ रहा है. क्योंकि मबुइका को मरना चाहिए था इनके हिसाब से. इससे ज्यादा सीरियस तो सेना का क्वेस्ट था. हाँ भाई सही बात है शशि, उसमें रुला दिया था उन्होंने. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. We emerge victorious from another crisis to declare our beloved Natlan is saved! Woo! All right! I must caution that this war is not yet over. I knew it. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Oh, man. Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. Okay. I'm sure you're all still fired up. And you must be eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all of us. It's kind of a shame that we can't join him with a final showdown. Please, look at the bigger picture. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. Tonight, we should celebrate to our heart's content. I guess if our lives are no longer at risk, things can basically go back to normal, right? That's good enough for me. Beats having monsters everywhere. When the time comes, I will gather everyone here again. Now, let us also remember those who gave their lives fighting for our nation. Once the last dregs of the Abyss are wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. An ancient name could never record the many who we lost. But no hero of Natlan should be forgotten. If I may, let's have a moment of silence for the fallen.
Lastly, there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need, and that is the Captain. Speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. विक्ट्रीज सेल बर्न क्या? अब ये लोग जीत के पार्टी भी ना करें, इससे मैं सीरियस और अनसीरियस कैसा? क्योंकि अभी भी थ्रेट खत्म थोड़ी हुआ है। अरे बात पार्टी की नहीं हुई है, बस इतने लोग मर गए हैं। थोड़ा सा तो सैडनेस दिखाया तो ऐसे सुबह से उन्होंने बोलते ना, वो लोग ग्रैंड फ्यूनरल देंगे उन्हें सबको। मैं पक्का बता रहा हूँ कि ये मवुइका को रिजरेक्ट करेंगे। आई मीन मेन प्लॉट ही द नेशन का, नेटलैंड का रिजरेक्शन नहीं। मेरे को लगता है मे बी सी वुड डाई, बट वो रिजरेक्ट होगी एज अ नॉर्मल पर्सन यहाँ पे हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है। बाकी नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि उसको मरवाने वाले हैं ना ये लोग। I am in a zero tolerance mood right now. Stop being so flippant. Unless you want to get punched in the face. What is it with you, Hal? Why are you so incapable of being nice? Oh, this is rich. One measly victory. It's all gone to your head. You would be mincemeat by now if not for heroic deed of the almighty Dragonlord. That's all. Alright, credit where credit due. Here's a bunch of grapes for your travel. Don't treat me like I'm your pet parrot. How are the season of canopy and collective of plenty? The passenger of the are the worst affected. I expect there will be delay on all deliveries in Netland for some time. Although unfortunately a lot of people have said they're willing to help part-time. That should be alleviate the situation. The collective of plenty was the furthest from the abyss's entry point, so they didn't have as many monsters to deal with. From what I hear, but it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she... That's good to hear. All's well that I... Well, what do you know? They are pretty tasty, oh servant. One more bunch of grapes post haste. वो अभी उसने उसको एज अ पेट क्या कहते हैं ग्रेप्स दिए थे, एजो ने मना किया, फिर उसके पीठ के पीछे जाके खा रहा है उसे, फिर बोल रहा है तू मेरा सर्वेंट है। नहीं, मवुई का प्लेबल होगी, बट आई थिंक एज अ नॉर्मल पर्सन, जैसे फुरीना का ये उन्होंने डिवाइन बॉडी छीन ली ना, वैसा आई थिंक मवुइका का ये लोग करने वाले हैं। आई फील लाइक, मेरे को ऐसा लगता है। पहले चिकन फाड़ दे, बाद में मरने वालों को दिखाते हैं। अच्छा सुजा भाई, आपको नहीं लगता इंग्लिश वॉइस एक्टर जो मिसिंग है उसके लिए कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए इन गेम? मिलना तो चाहिए, बट देंगे थोड़े ये लोग, चिंधी लोग हैं ना स्पेस एक्स। एक काम करो, साइन ऑफ कैनेपी जाओ, वहां मेमोरियल मिलेगा जो लोग मरे हैं। अच्छा सही में? To be honest, Suvasis, it's their fault because they should have, thought about this beforehand and they could have. मैं तो बोलता हूँ भाई, अगर ये लोग ओरिजिनल लाइक किनिच के वॉइस एक्टर को भी नहीं डालते ना, एटलीस्ट किसी ना किसी को हायर करके, रैंडम पर्सन को, या जो न्यू बंदा जो चांसेस ढूंढ रहा है इस इंडस्ट्री में, उसको हायर करके लाइक ये लोग उसकी वॉइस दे देते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट टेम्पररी ही देते तो सही यहाँ पे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कुछ पार्ट तो वहां पे भी उनका भी फॉल्ट है, ऐसे थोड़ी कोई स्ट्राइक पे बढ़ जाता है। नहीं लग रहा मुझे। ओके पॉली, ओके ड्रैगो इन उतन का। You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost.
Nah, I just figured out I should do my part, you know. I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. They said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start Same situation for the Children of Echoes. Still, it's so sad that some people couldn't be saved by the Ode of Resurrection. I think I wanna hold the candlelight vigil for them when I get home. Oh, that's a great idea. Let's do it together. Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. An age of... Fontaine was the best for me. I mean, if you want to cry, you can go for Natlan. And if you... Natlan बोल रहा, sorry, Fontaine. And if you want to get chills, ना, you want... like, तुम... इनाजुमा विजिट करना चाहते हो बिकॉज मेरे को लगता है इनाजुमा जैसा चिल्स पता किसी ने नहीं दिया मेरे को फिर अगर तुमको लाइक आई थिंक सुमेरु का भी सेम था क्राइंग वाला ही सीन था लेकिन फॉन्टेन ज्यादा मतलब सैड था कंपेयर टू सुमेरु मैं बोलूँगा अरे मुझे जितना लगता है जो नेटलैंड के डिवाइन जिनोसिस है वो लास्ट में कैप्टनों को दे क्योंकि कैप्टन ऑफिशियल फाइट में हेल्प करेगा देखते हैं कौन सा अकाउंट रिव्यू किसको करवाना था कोई नहीं है यहाँ पे स्ट्रीम पे जिसको करवाना है ससी नहीं मेरे को नहीं लगा इनाजुमा ड्रैग्ड था टू बी ऑनेस्ट इट वाज गुड एंड इट वाज ऑल मेंट टू बी जैसा होना चाहिए था तुम हर चीज को अगर डायरेक्ट बोलोगे तो फिर ऐसे काम थोड़ी चलेगा ऐसे तो फिर तुम यही बोलोगे गेम में कंटेंट नहीं है गेम में कुछ करने के लिए नहीं है गेम बोरिंग है ब्ला 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 करते रहोगे जिंदगी भर तो ऐसा नहीं है मेरे को नहीं लगता है कि इनाजुमा का स्टोरी डायरेक्ट था टू बी ऑनेस्ट नीदर आई डू थिंक कि यहाँ पे नेटलैंड का स्टोरी डायरेक्ट है इट जस्ट ये उनका पेस है चीजों को समझाने का चीजें बिल्डअप करने का नहीं तो लोगों की एंट्री कैसे होगी यहाँ पे स्टोरी में इंट्रोडक्शन कैसे होगा I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. You remind me of the Prince. The similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. I hope you will see him soon. Thank you. Hey, Auroran! How are the Masters of the Night Wind doing? Granny Sealali's been there the whole time, and she's a tough one. I think we should be fine. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. I should probably head back so I can pitch in. Do you need support from the Fatui? Probably not. There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your comrade's presence a little distressing. Right, because often they look like a bunch of intimidating thugs. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. Let's talk to Mabuika. Welcome. You seem a little out of sorts. Are you just tired, or...? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Natlan stretching out below me. People everywhere, giving everything they had for a chance at victory. I just... If only I'd been quicker. Maybe they wouldn't have... And Koichi. Maybe she'd still... I'm sorry. Now is not the time for that. Fruit juice, right? Make it a large? At least it's over now, that's something. True. My 500-year plan has almost come to fruition. Just one last step to go. Hello, how are you doing? I'm doing great, Lloyd. आप कैसे हैं? Imagine अगर कैप्टनों का VA स्ट्राइक पे होता, उसकी रिकॉर्डिंग ना हुई होती, भाई लोग पागल हो जाते हैं जो पता है बोलते न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करो भाई ओएवर्स के क्वार्टर्स पे लोग पता है उतने पागल नहीं है कि किनिच और कचीना का वो VA मिसिंग है
बट अगर कैप्टनों का मिसिंग होता तो इट्स अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि कैप्टनों का बहुत कैमियो था यहाँ पे एंड लाइक बहुत ज़्यादा रोल था, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। आई थिंक तबात का फर्मामेंट ब्रेक हो गया था थोड़ी देर के लिए फाइट में। फर्मामेंट ब्रेक हो गया था मतलब? Namely, my final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so I'm not feeling a huge amount of pressure. To be honest, पता है किनीच लड़का है और कचीना पता है वो है ना बच्ची है। People don't care about them, but अगर तुम्हारे like ऐसे जो like वाइफू टाइप के कैरेक्टर हैं या मेजर विलन वाले कैरेक्टर हैं, उनके वॉइस एक्टर मिसिंग रहेंगे या वॉइस लाइन मिसिंग रहेगी, तो then it's a big deal for people actually. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch. Are you always gonna have that kind of power? Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to handle it. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. क्या वो तबैत का तो फेक इसका है ना? हाँ, तबैत का फेक इसका है, बट उसने पोर्टल पे मारा था ना, तो पोर्टल का फेक स्काई से लेना देना थोड़ी है। जैसे उसने मबुइका ने स्काई को थोड़ी हिट किया था, मबुइका ने तो पोर्टल को हिट किया था। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस किया, पोर्टल के अंदर रेड कलर के वो ब्रिक्स वगैरह कुछ तो आए थे ऐसे, तो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ दैट स्टार्टिंग में जो हमको यू नो हेवनली प्रिंसिपल वगैरह कुछ मिलती नहीं है, जो हमको हमारे भाई को लॉक कर देती है अलग से ब्रिक में, वैसा वाला ब्रिक वाली फीलिंग आ रही थी उस ब्रिक को देख के। तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि लाइक वहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट है। लाइक हम हेवनली प्रिंसिपल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हेवनली प्रिंसिपल की जगह हमको अबिस वालों में ढूंढना चाहिए जिनका ये किया धरा है। वो ब्रेक हुआ बाहर का दिखा, वो ब्रोक मून। कौन सा बाहर का ब्रोक मून दिखा? कोई मून नहीं दिखा था भाई, क्या बोल रहा था? आई थिंक फर्मामेंट के बाहर का ही अबिस है। फर्मामेंट है क्या? फर्मामेंट है क्या? मेरे को ये तो बता, फर्मामेंट क्या होता है? Correct. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasion. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. Anyway, there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful foes. In this war, you were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? So I can look back on my journey with a clear conscience. I just can't turn blind eye to injustice because Paimon hates to see people suffer. You know, it's that mindset that distinguishes the heroes in every story. They're the natural protagonists. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. हम लोग भी जाएंगे क्या वहाँ You पे and I अंदर पे? together, finally putting an end to the ever-looming threat of the Abyss. But I also don't want to take advantage of your good nature and readiness to help others. हम लोग The भी final जाएंगे guys. battle will be very dangerous, and you have the rest of your journey to consider. I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your... क्या बोल रहा है? वो लेयर्स हैं जिससे फेन्स ने सील किया हुआ है तबैत को। फेन्स ने उस पे फेक स्काई दिखता है। फेन्स क्या होता है?
ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा हो गए सारे. कीप चैटिंग और रिटर्न टू द रूम. रिटर्न टू द रूम ऑब्वियसली. Alright. Let me sleep. Primordial one, XL. अच्छा. बट देन अगर स्काई फेक है ससी, वो अगर कवर्ड है हमारा प्लैनेट किसी चीज से, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि डे एंड नाइट कैसे हो रहा है. हाउ आर वी एबल टू परसीव लाइक डे एंड नाइट? हाउ आर वी एबल टू परसीव लाइक सन एंड मून? Hey, traveler, Paimon. There you are. I've been looking all over for you. Oh, hey, Sweet Lolly. What's up? Listen up. I have something really important to tell you. What? Are you serious? बट जिस हिसाब से डिस्टेंस है सन एंड मून की, लगता तो नहीं है कि वो लाइक. हाँ, ये हो सकता है कि देयर विल बी अ लेयर जिसके थ्रू हमारा प्लेनेट कवर्ड है, तो हम वी कांट लीव द प्लेनेट ऑब्वियसली. एंड ट्रांसपेरेंट लेयर होगी तो आउटसाइड यू नो जो सन एंड मून है उसको हम परसीव कर पा रहे हैं. बट सन एंड मून थोड़ी फेक तुम प्लांट कर सकते हो स्काई में. Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. Oh, so using any क्या कहते हैं उन्हें, हेवनली प्रिंसिपल की कोई भी पावर को यूज करने का एक प्राइस होता है. इट सीम्स लाइक जैसे लाइक फाउंटेन में था तुम्हारा, ये प्राइमोडियल वाटर को कन्वर्ट करके इन्होंने फाउंटेन पीपल बनाए थे. ओके. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. अगर लाइक मबुइका ने लेयर को हिट किया है तो काफी आसानी से नहीं हिट कर दिया, ऐसा नहीं लगता है तेरे को ससी? उस हिसाब से तो सन एंड मून बहुत क्लोज हो जाएंगे अर्थ के, इसके प्लेनेट के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं है, फर्मामेंट मींस बाहर नहीं देख सकते, जो है फर्मामेंट के अंदर ही है. Even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is... I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone. I'll see what I can do. Okay, good. That makes me feel a little better. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the... Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power. But if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances. Got it. Mum's the word. Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this... Go easy though, yeah? Don't worry, I said a drink. That means just one. बट हम मबुइका से बात करने जा रहे थे तो मेरे को खींच के ले गई भाई ड्रिंक्स के नाम पे. All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. क्या लिखा है? अभी इसने पोर्टल खोला ना अटैक करने के लिए, उसको ब्रेक करा तो बाहर का दिखा. आई थिंक फर्मामेंट नहीं टूटा बट वो पोर्टल के उस पार का दिखा. तो वही तो बोल रहा था, वो हो सकता है पोर्टल के अंदर जो चीज है वो चीज हमको दिखी होगी. हमको एक्चुअली हमारे स्काई का थोड़ी दिखा था वहां पे. वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक वो रेड ब्रिक्स आई थिंक वो पोर्टल के अंदर थे, पोर्टल के थ्रू हमारे स्काई का नहीं था वो. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't going to accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional... I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here.
Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here. Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made this shot. The science of the canopy raised them tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. It seems वो वापस से memories visit कर रहे हैं. A fuel named Fate. Continue your journey. Guys, finally हमको मूवी का यूज करने मिली है. See this? I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Mollypo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won. It's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer up. हाँ, बट वो रेड ब्रिक्स तबात के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. उन ब्रिक्स से ही तो तबात बना है. बट वी आर नॉट श्योर ना जैसे. ये तो एजम्पशन है हमारा. ये तो हमारा एजम्पशन है. ऐसे तो मबुइका ने भी बोला था कि फ्लोजिस्टोन इज द प्राइमोडियल एनर्जी ऑफ तबात. समझ रहे हैं तो कि सबसे ओल्डेस्ट एनर्जी है जिससे सारे एलिमेंट ओरिजिनेट हुए हैं. सारी एलिमेंटल पावर बनी है. इसी को लाइक प्राइमोडियल वन के पावर्स के साथ इम्ब्यूड करके एलिमेंटल एनर्जी बनाई गई है. उसने मबुइका ने यही चीज बोली है. ब्रिक्स के बारे में तो हमको आइडिया भी नहीं है. वो तो assumption है हमारा सिर्फ. I'll get my own ancient name soon enough. Oh, really? Well, good luck with that. Unless... surely you don't mean Kiangozi? इन्होंने लगता है अभी कुछ नहीं दिया है इसे. लाइक सिंपल मॉडल है ये. कुछ भी नहीं दिया है इसे. आइडियल एनिमेशन अगर कुछ नहीं दिया है. That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently... Worried that you won't be able to beat me in a wrestle? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even if that job happens to be Archon. Come on. One more round. अब कहाँ जाना है? After the darkness will come the dawn. वाह भाई, पैदल चल के जाना है उतना दूर तक हमें अभी. No one fights alone. For Natlan! मैं आगे चल भी रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. मबुइका ने हेवनली प्रिंसिपल्स की नहीं सेड ऑफ डेथ की पावर का यूज करी है. हाँ, लेकिन वो सी वाज पार्ट ऑफ हेवनली प्रिंसिपल. सी वाज एमिसरी ऑफ क्या कहते हैं हेवनली प्रिंसिपल. एंड हेवनली प्रिंसिपल को जब ये मालूम चला कि सेड ऑफ डेथ जो है रोनोवा की, रोनोवा ने एक्चुअली क्या कहते हैं अपनी पावर से ले लाइंस डिस्ट्रीब्यूशन को
चेंज वेंज किया है या वो उसकी पावर को इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने उसको वैंक्विश किया था। उसने जब वैंक्विश किया तो उसकी पावर जो थी दैट गॉट मर्ज्ड विथ पायरो आर्कॉन एक्स ब्लांक के, ऐसा समझ। एंड यूजिंग दैट पावर अगेन कम्स विथ अ प्राइस, लाइक आई सेड, क्योंकि वो स्टिल काउंट एज अ हेवीली प्रिंसिपल की पावर, क्योंकि तुम्हारी जो वो थी ना प्राइमोडियल पावर थी, उसको इस्तेमाल करके जब मॉन्टेन ने यूज किया था, पीपल बनाया था, तो हर एक बंदा क्या कहते हैं वो कर्स्ड हो गया था, ऐसा समझ लो। हर एक बंदा और हर एक आर्कॉन जो था कर्स्ड हो गया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मबुइका ने अपनी वो पावर यूज की और किसी के ऊपर यूज नहीं किया, इसलिए वो अकेली यहाँ पे कर्स्ड हुई है। वो उसको शिवलंका बोलते हैं। हाँ ठीक है, जो भी है। I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. They will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargain. अब मेरे को लग रहा है रोनोवा जो थी वो करंट पायरो आर्कॉन थी उस टाइम, नाइट ऑफ लाइक शेड ऑफ डेथ वाली जो रोनोवा थी, वो करंट पायरो आर्कॉन मबुइका ही है। एक्स ब्लांक की अगर मेल था तो वो फीमेल थोड़ी बन सकती है रिजरेक्ट होने के बाद। नाउ इट मेक्स सेंस एवरीथिंग यहाँ पे। You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. My domain is death, and its power comes at a great price. The quest— I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. For only then can the price be paid. Those are the rules. Mine is a nation that will not yield to the Abyss. And it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of. Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do as I please as you might think. Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Shibalanke stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Lol. Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient I received name? the gift from the Lord of the Night. I'm surprised she was willing to help you. And by extension, me. I'm very— Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the Traveler still need one by this point? Because he wants me to join her in the final That's battle. right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. Is it the Ode of Resistance working again? Not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. Good, then I will join you in battle. Sounds like I'm your only option anyway. Whoa, whoa, whoa! I
forgetting something here? What about Paimon? What's her place in all this? You will need to stay behind. What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. If you two go there together, you can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? It will be complete mess, I'm sure, but only for short time. Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. If you have any other questions. Leave the speaker's chamber. As I've said, if you have any other questions, About please aftermath ask of away. the war. The work of rebuilding is underway, and people are flocking to join the effort. With everyone rallying together, I'm sure it won't be long before there's no trace left of the damage done by this war. The healing process, on the other hand, that's a bigger obstacle to overcome. Many are grieving, and there's simply no replacement. As the sun rises once more, and we rediscover the ability to believe in the future. As I've said, if you have any other questions, please ask About away. the false sky and the strange fragment. False sky. I have heard this expression before, but I think this was the first proof of its existence. I think there's a lot of investigating to be done to understand what the fragments behind the sky are and why they were hidden in the first place. However, from what the Adventurers Guild tells me, neither the split sky phenomenon nor the fragments have ever been observed in any other nation. My guess is that the Heavenly Principles wants them kept a secret. I just hope they don't cause me any trouble over it. Oh, you should be fine. We did something much crazier back in Fontaine and we're still here. Well, that's good to know. Anyway, the line I'm going with for the masses is astronomical anomaly. And I don't meanwhile, we can look into it at our own pace. As I've said, if you have any other questions, please ask away. About 6 heroes of That old. wasn't their souls we saw, but a snapshot of them in time. All the work of the ancient name engravers 500 years ago, who made some special modifications to their names. Their souls returned to the Night Kingdom long ago, and will have been reborn in Natlan since, albeit in a different form. For all we know, and so, even though we will never meet again, I think that gives another layer of meaning to the phrase no. As I've said, if you have any other questions, please ask. We have a temporary alliance, but I can tell that saving Natlan is not his only goal. Yeah, Paimon still doesn't get why saving Natlan would be so important to him in the first place. Unless he's just a good guy who wants to avoid another Conria. But somehow Paimon doubts it's... I wouldn't worry too much. देखा वो बोल Based रहा है on all the sky split interactions हुआ we've had with and him बाहर and fragment देखे knowing हाँ more मैं about भी his देखा background, जैसे I have a lot I of thought respect वो for portal him. के अंदर है I don't think he has any ill intention. Now, we should focus on the final battle. As I've said, if you have any other questions, please ask away. The Outlander with deep ties to this land returns. And this time, he is alone. The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the Ruler of Death. From what I know of her rules, she will demand death in return. How do you know this? I see. So, the Ruler of Death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. कैप्टन क्या करने वाला है ये कैप्टन क्या करने वाला है उसके साथ अच्छा हाँ अब उसकी सिस्टर को वो करना है हमें
कैप्टन का अलग ही चल रहा है भाई, फाइनल बैटल बोल रहा है कुछ तो कैप्टन। एंड आई थिंक दिस इज द मेमोरियल फॉर द पीपल जो मरे हैं यहाँ पे। रिकॉर्ड पेंड बाय ऑल, मे द बायो ग्रांट यू पीस, मे द सॉन्ग्स बी sung by your life's journey. What follow is a list of names you of the disease. Dance as forest written by those who mourn them. You see many familiar name on it. Baita, Vichama, Vats, Tilua, Kuichi and Hunza. We give thanks to the gift of your lives in ours. We look forward to the meeting you again one day in the world of wonder and beauty. कौन बोल रहा था मेमोरियल एग्जिस्ट नहीं करता का इस गेम पे? मेमोरियल है तो यहाँ पे गेम पे है। वह कहाँ चढ़ रही है? वॉल क्यों चढ़ने लगी? मेरे को 2 बॉल दिखा रहा था, ये खत्म कैसे हो गई बॉल्स मेरी यहाँ पे? अभी तो 2 बॉल्स दिखा रहा था मुझे। लेट्स सी ट्राइब्स में जाके देखते हैं क्या चल रहा है। ट्राइब्स में तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आई सी नो चेंज यहाँ पे ट्राइब्स में। एवरीथिंग लुक्स एंड फील्स सेम यहाँ पे। पूरा सेम है यहाँ पे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वाह भाई, नीचे गिर ही गया वो। मैं लग रहा था गिरेगी नहीं, वो गिर गई ऑलरेडी। These should be worth something. Bring it! ट्राइब में कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम है यहाँ पे। इनमें मेमोरियल वगैरह नहीं बनाया, वहीं पे बनाया है सिर्फ मेमोरियल नीचे साइड में। यहाँ पे कुछ भी मेमोरियल वगैरह नहीं है इनके। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ट्राइब में। All right. ओके, यहाँ पे सब सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है मैप में। कुछ भी चेंज नहीं है मैप में। अकेला वो से उससे एक टावर के अलावा कुछ चेंज नहीं है। लेट्स सी इस पे क्या रिकॉर्ड खुले हैं हमारे। इस पे कुछ चेंज नहीं हुआ, हमने इतनी बड़ी फाइट लड़ी और इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ।
हमारा यहाँ पे है। बताओ यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। इतनी बड़ी फाइट लग रही, हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें रिकॉर्ड में। गोल्डन एंटिटी ये कहाँ से आया है? फ्लेम लॉर्ड्स ब्लेसिंग। ये कहाँ का है? प्रिंस क्यूबाद। आई थिंक ये सुमेरु का है। रेल्म डिस्पैच। अच्छी थी स्टोरी, वो पूरी नहीं थी पता, टू बी ऑनेस्ट। अभी लाइक लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या मिला है? अच्छा ये फूड है। केक भेजी उसने फुरीना ने। फुरीना का बर्थडे है। पोरला जस्टिस। चलो दैट्स टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। अब मिलेंगे हम लोग कल। बाय बाय गाइस, एवरीवन हैव अ गुड स्लीप एंड हैव अ ग्रेट डे फॉर यू गाइस। नाइट सभी को मिलते हैं कल आप लोगों से विथ जेंशिन इम्पैक्ट प्रोबेबली, क्योंकि जेंशिन इम्पैक्ट में इवेंट बचा है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हमारा इसका लाइक वो बचा होगा, ट्राइबल क्रॉनिकल है। एंड फिर हम एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं हमारा जेंशिन में, नेटलन का जो बचा है हमारा। ठीक है, बाय बाय गाइस, नॉट एवरीवन हैव अ गुड स्लीप एंड हैव अ ग्रेट डे फॉर यू नाइट। सभी को मिलते हैं अब आप लोगों से कल विद जेंशिन इम्पैक्ट अगेन। बाय बाय, गुड नाइट सभी को गाइस। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.